Good afternoon, participants, and I'm sorry about the little glitch which has happened. We just lost connection at the university. But thank you so much for the introduction, and a special thank you to Professor Atik, Director of the MMTTC Sant Gadge Baba Amravati University, for giving me this opportunity to speak to you all. Just allow me a minute before I share my screen. Can you confirm if my screen is visible? Yes, madam. Yes. Visible. Yes, because I can only see another screen in front of me, the organizer screen. How many participants do we have here online? How many have registered for this particular one? Participants? Is anyone online? How many regular participants have been regularly attending the last 2 3 days? Participant, could you please confirm what is visible on my screen? Is it other slides moving? No, ma'am. The slides aren't moving. It's only the first slide, I think. Academic leadership, governance, and management. Your name. Yes, now it's moving. Oh, oh, it is. So you can see my slide right now, right? Participant, can you confirm if my screen is visible and my slide is visible right now? My second slide is visible right now. Yes, ma'am. Okay, okay, yes, thank you. So this the theme academic leadership, governance, and management has three sub themes. That's the academic leadership, the institutional development plan, and the management and governance. So I'll be dealing with the institutional development plan. So academic leadership, governance, and management. Academic leadership is critical for an institute to deliver on its mandate. The leadership drives key initiatives and mechanisms for the performance excellence of any institute. An administrator or an academic leader, I think you must have done this topic before, can create conditions and I can either break or I can make an institute. So, for effective decision making and exhibiting leadership skills, it's crucial to gain the training and enhance one's capacity. So, it all depends on the academic leader, on the leader, and its team. You can't only depend on the leader itself. So, if the leader takes a decision along with his team, which is in the right direction, one can make the institute. If it's in the wrong direction, then it would break the institute. So governance management are both related to academic administrative changes as well as overall institutional development. Hence, equipping with the leadership and the right attitude, skill, and knowledge becomes pertinent. So, in an interview with the Hindu, the UGC chairperson, our former chairperson, Dr. Jagdish Kumar, highlighted the aims and the guidelines, which said it outlines the long-term vision, mission, objectives, and strategies, as well as the actions required to achieve the goals. By adopting this IDP, that's the Institutional Development Plan, higher education institutes can achieve effective functioning, growth, and sustainability since it provides a roadmap for success
improves resource management, and fosters a culture of accountability and continuous improvement. Just a minute, I'll just switch over to my other device. Okay, so what do you think from this statement now? It outlines a long-term vision, mission, and objectives. So does anyone know what is vision or mission over here? Participants? Participants, are you all present here online or are still joining? Because I see from 28 it's now become 41. So my first question still follows. What is the number of participants that have been regularly attending this NP program? Okay. No idea about long-term vision. What's the meaning of vision mission? Okay, in any case, we'll be coming to in the next few slides. Institutional development plan, the roadmap for planning the vision, mission, and goals of an institute in an alignment with the NEP 2020. This will guide the governing bodies of an institute to devise the immediate goals as well as envision the next years of an institute. So, when we have next years of an institute, it does not mean just next year, it means the further years ahead. So, it's not just 1 year ahead, it is like further on, far away or so. So, it is like on also. Okay. A guide for the key work areas for workforce are the HEI on a short, middle, or a long term basis. So it does not mean to say it's going to be a vision is only like 5, 10 years, 15, 20 years ahead. It also could be what is happening in the next 2 to 3 years. That is your short term. In the next 5 to 7 years, that's your midterm. In 10 to 15 years, that's your long term. So it is also envisioning what is happening in the short, middle, and long term basis too. The IDP is at the fulcrum of achievement of success parameters for an institute. So, what do the new IDP guidelines propose? So, as higher education governing body is in the process of facilitating a wide transformation of existing curricula and teaching and learning methods, the new set of guidelines is direct influence of the UGC's proactive attempts to enhance academia and also research standards. So, some proposed guidelines we have on the draft, which include physical restructuring of campuses. So, over here, you have like the layout of the campuses should be updated with infrastructure improvement, how it is between the academia, the research, the outreach, the cultural, the operational activities. How is it happening? Emphasis also should be given on not just academics and research, but also on extracurricular activities like artistic expression, what is its originality, some space for also physical activity. So just not only um, academics and research, but it could also deal with music, art, dance, sports, etc. Also, there could be a focus on healthcare facilities, and that could include well-being centers not only for physical healthness but also for mental health. Next one is your shift to the digital methods. So over here you have the draft also has a lot of benefits which improve learning experiences, and this would help to make quicker decisions. So that is good in when you're taking
leadership action, so you have decision making, so you have quick decision making, so you have a better improved transparency system, better communication with the horizontal as well as in the vertical direction. So UGC advises the higher education institutes to develop a roadmap which embraces the ICT and the virtual technologies for the learning and teaching in order to progress towards digital universities. Next, we have is seeking external funding. So over here, the draft proposes HEIs to identify and prioritize funding sources, which include the government grants, the alumni donations, private sector positions. Somehow, the revenue has to come in. So, seeking external fundings is you build a good relationship with your alumni. They would sponsor something, or you have some project which is a government project. Then that is how you would get in some revenue, or even if you have some partnership with an industry, or you have some internship with the industry later initially and then later on a partnership with the industry, that is how you would get your external funding system done. So this would be also dealing with the tuition fees or government grants, or even if you have some patents, that would bring in the royalties inside. Finally, you have realignment of the extra existing curricula. So over here it plans and it implements procedures that will help to match the current curricula to international frameworks like the National Education Policy, the National Credit Framework, the National Higher Education Qualification Framework, the National Skill Qualification Framework. Also, additional capacity building or even faculty development would be used to upskill the existing skills among the faculty, reskilling what you already know, or even adding on your skills. So, saying about the vision mission. So, you have vision is a long term aspiration. The vision statements articulate an institute's long term goal, and it's the kind of institute that it aspires to be. So, what you envision very far away, what you want your institute to become, what you want your country to become, that is like a vision of a far away 15, 20 years ahead. Impact and influence would defines the desired impact the institute wants to have on its students, community, and the broader world. So, an example of what you can do as a mission statement: you want your institute to be internationally acclaimed, recognized for its teaching, for its research, for its outreach programs. So that could be like a vision statement. Or you could even have another vision statement to have a good, supportive academic environment for students so that it is ingrained with sincerity. So you have something of value also in it. So not just vision. Or you can have, you want to be the nationally well known institute that makes a difference. Okay, so this is about vision. In mission, you have the specific actions or the strategies. So, mission statement outlines the core activities and the strategies the institute will employ to achieve its vision. So, exactly how you will get to your vision point, how you will reach there, that is known as your mission. So, the specific actions, the mission statement outlines the core activities and the strategies it will use to employ to get achieve its vision and how it will be achieved. So, it explains how the institute will fulfill its vision and what it will do to achieve its goals. So, the roadmap to reach its vision, how you will exactly overcome each goal with particular objectives, you will reach your vision. So the way to reach your vision is called the mission. An example of a mission: how you will get or guarantee high education or quality education. The way to reach there is the mission. So to impart high quality education and research experience to students. So what was your vision for this? To be internationally well known. How will you do that? By imparting quality education. So that is your mission. Or second way of doing it is to strive year round. Year round, you will be working hard to provide opportunities for students to belong to different strata, and this will be done through well organized programs to realize each one's true potential. So, knowing each one's true potential, the students will become better overall, not just in one particular stream but interdisciplinary. Also, you could have it like to offer nationally and internationally integrated opportunities for students to create
global citizens. Okay. So the next one is key elements of a good IDP vision and mission. Just want to confirm, is my screen still visible? My PowerPoint screen still visible? Yes, ma'am. I still don't have, yes, I don't have any participant who is active online over here. Yes, ma'am, it's visible. Yes, only one was I'm trying actually to get everyone to talk. Actually, I wanted to know from which streams you all are from presently, mostly at least. No? Okay. Fine. The key elements of a good IDP vision and mission. So, what is the way of having a good? What's the elements? So, it has to be clear and concise. When you see clear and concise, both the statements should be easy to understand and remember. So, when you say clear, you should use simple language to make it clear. Everyone should understand what your institute is and why they should join your institute. Concise, it should be short so that it's not a big long paragraph or pages that you have to read before you know understand what is happening and why you need to join. So clear and concise. Second thing, it has to be ambitious and inspiring. So it should also motivate stakeholders towards the achieving the institution's goal. So, knowing what it is, it should be reached. It should not be impossible to be reached. So, ambitious, you shouldn't be over ambitious at something out of the world that it can never happen. Okay. And inspiring, you should try to motivate everyone to say, yes, this is what is this and how we will overcome it. Measurable and achievable. So here it should be realistic and attainable. So it should be reached somehow and it should be real. It shouldn't be imaginary for allowing the progress, tracking, and evaluation. Okay, so this is dealing with the measurable. It should be able to be measured how much, what it is, and achievable. It should be possible to be attained. Last is the alignment with the institutional values. So one must have good values. It should reflect the core values. The vision and the mission should reflect the values and the principles of the institute. Okay. So coming to the institutional development plan, which is under the NEP 2020, this is something what it will look like in future. The demand is to have a very large multidisciplinary institute having a lot of number of students under to have like right now written it should be more than 3000 or more students with multidisciplinary, and I'll come to the details in the next few slides. But this is what a campus would look like in the future. Institutes into large multidisciplinary institutes having 3000 or more students to build a vibrant community of scholars and peers, and they would only one particular discipline but they would have a well-rounded across all the disciplines including the artistic creativity analytical subjects as well as sports also, and doing research not just in one particular discipline but having it cross discipline research which would increase the resource efficiency both in material way and human way also across the education. Next is moving to high multidisciplinary universities and higher education clusters. So this would be recommended in with respect to the structure of the higher education, and many of the ancient universities, that is Takshashila, Nalanda, Vikramshila, in the past had thousands and thousands of students learning in a vibrant multidisciplinary environment, having a lot of large multidisciplinary research. And this is what India could do, and it would be good in research and teaching universities that would bring great success to each institute. So India needs to bring back the ancient great Indian tradition that was there earlier and come back to it, which is already transforming uh, students, and it's also competing with other countries too. Next, we have over here is research institute, research intensive universities and teaching intensive universities.
Now, in the case of research intensive universities, it doesn't mean that it has to be only research, so it's research intensive. It means that it is dealing more with research, less with teaching. So it's research intensive university. Teaching intensive university is dealing more with teaching, so it's more teaching, and there is also less research, but it also does exist. Autonomous degree colleges would be autonomous, as the word says it, not not attached to any university, but they can adopt either ways. They can also either adopt a research intensive courses, or they could do a teaching intensive in their college. So they can also switch over from one to the other if they wish to do so. Okay, but this would be considered like a smaller university. Next one is a stage-wise mechanism is used to make the colleges. They are also encouraged to um, get and become autonomous, granting degree granting colleges or constituent colleges of the university, then to be attached to a university. They also can, as I mentioned, they can develop into research intensive or teaching intensive universities. From the colleges, they can change to universities too. Okay. Supports higher education institutes in their development, community engagement and services, contribution to various fields of practice, curriculum development, and support to school education. So over here you have higher educations moving freely from one category to the other based on the plans of action, what is there exactly, how the goal will be, what focus is there required, what the accreditation system, how it would develop to have different norms across the higher education institute. Also, this would be expectant of the high quality education, and of course, the teaching learning process across all the higher educations also would be the same. Okay, so by 2040, all the higher education institutes are aiming to become multidisciplinary education institutes with large number of enrollments. So the enrollments of 3,000 or more students in the year 2040 with multidisciplinary institutes. To do that, by 2030, everyone is trying to become multidisciplinary first. So offer different number of subjects with different number of combinations, and whatever the students would prefer and would like to have would be done by 2030, having a multidisciplinary approach. That would attract a lot of number of students, and therefore that would build up the number of students to more than 3,000 or so. Right now we're saying 3,000, it would go into tens of thousands too. Okay. In addition to that, in the year 2030, at least one large multidisciplinary institute would be present in or even near every district. So, this would help uh, students to not travel too far. Of course, now it's happening online, but that would be also in future, it would be offline because it would be close by to you. Okay, so this is what is happening by 2030. The next aim is to increase the gross enrollment ratio. This has always been there from 2018, what it was as 26.3 to at least 50% by 2035. So it would develop a large and outstanding public institutes. So growth would be both in public and private institutes with more emphasis on the large number of outstanding public institutes, which would be a fair and transparent system for public funding support for public HEIs. So the system would be given equal opportunity for the public institutes also to grow and develop based on its transparent pre-announced criteria from which the accreditation of the accreditation system high quality which is being set up in the expansion of the capacity. Next, we have is the open distance learning that we have, and the other online programs are also provided so that they are accredited to do so, and it would enhance the offering of what is present and increase in the GR and provide lifelong learning. That's the SHG4. So, top institutes would be having the ODLs, and they will be encouraged to support the high quality online courses, and therefore blended learning would be preferred. Okay. Single stream HEIs would be phased out in time, saying that I am done only commerce or only science or only arts. It would be a mix of everything. So it would become a vibrant multidisciplinary institute on parts of the vibrant multidisciplinary higher education clusters
would become multidisciplinary or even cross-disciplinary teaching and research too. So one would not do research in only one field, one would do a research in a interdisciplinary way. Okay, so the HE sector would become an integrated HE system, including the professional and vocational education. And the overall higher education sector would aim to provide integrated higher education system, including professional and vocational education. And this policy and its approach also would be applicable in HEIs across all the current streams, which also would merge into one higher education. So, universities worldwide would become multidisciplinary institutes of higher learning for undergraduate, graduates, and PhD programs. So, this would engage in high quality teaching and research too. So, the present nomenclature that we have deemed to be university, affiliating university, affiliating technical university, unitary university would be replaced by the word just university, fulfilling the criteria as per the norms which were required. Okay, so I want to know from the participants now, please, what are the five foundation pillars of NEP 2020? Participants, participants, can you please tell me? Actually, it is requested that every participant has to turn on their cameras. Kritika, Ashwini, Prashant, Sasmita, Pragati, could you please answer? Access, Yes, access is one. affordability, Okay, equality, okay. I don't need answers from only one participant. I meant to say it can be from any. equity, Okay, Kritika, since I mentioned your name, I didn't pinpoint you. I meant to say in general. Other participants too? Okay, let's go back to it. Yes, thank you so much, Kritika. We have the first one as access. So everyone has to have access to education. It does not mean to say that if uh, if there is access, it is only for one. It should have everyone should have equal access to information. So high quality formal education should be accessible to everybody. Equity. Now, equity does not mean equal, it means equity. It does not mean giving everyone the same opportunity or so. It is having fairness and justice in the distribution of resources, giving opportunities and privileges, and taking into account what the unique circumstances. So it does not mean like equality would be providing the same resources to and opportunities to everybody, but equity is providing the fair justice in providing the opportunity for the distribution of resources to everybody. That is equity. Okay. So in the case of equity, you have a gender neutral policy. Quality, of course, high quality education should be provided to the students. So we have over here, they should have access. Equity and high quality should be able to be accessed by everyone. Affordability, it should be made affordable for the student. Of course, right now when you are attending this particular program, it is very affordable because it's a free program of a week or so, and of course at the end you get even a certificate. So this is how
education should be. It should be affordable, it should be easy accessible to everybody too. Okay, so formal education should be made world class education affordable for a student. Last is accountability. So it should be accountable to all the stakeholders too. Okay, so this is your five foundational pillars of NEP 2020 in the education: accessibility, equity, quality, affordability, and accountability. Coming to introduction of the IDP, we have a strategic blueprint which was aligned to the HEIs with NEP 2020 goals. It focuses on the governance, quality, and innovation, inclusivity too, and it should emphasize also on the autonomy, accountability, and the flexibility. So the institutional framework of universities is central universities, state universities, deemed universities, private and autonomous colleges. That we are trying to make it now research intensive universities, mostly dealing with research, teaching intensive universities, mostly dealing with teachers, less of research, more of teaching, autonomous colleges. Besides that, you have the professional HEIs, which deals with the law, medicine, and management. Organizational design of the HEIs would deal with academic council that would deal more with the curriculum and assessments, the board of governors, which would be of the strategic vision and funding, the research and innovation council, and the student development cell. Next, we have is the UGC, AICT, and the national bodies. We have the UGC, which would deal more with the funding, coordination, and standards and quality. The ACT would be more with the technical educational regulation. The other agencies are dealing with teacher education, the ICAR for the agriculture education, MCI, NMC with the medical education, and finally the PCI with the pharmacy education. The state level institutes and the interrelationships, you have the state higher education councils, the state accreditation bodies, the university syndicates, and the linkage to the national agencies. These are reporting to the UGCs and the AICTs, and they also adopt national policies at the state levels. Quality framework in higher education, we have the academic standards, the performance learning outcomes. You would mostly focus on the outcome based education, the competency based curricula, the innovation and the skill integration, and the global collaboration. Academic standards setting agencies, we have the UGC model curriculum and the credit framework, AICT technical standards and the guidelines. The ICAR, the NCT would be sector specific standards. Finally, you have the accreditation framework, who would accredit it, who would check out and say what level you have reached. So you have the NAC, the institutional assessment and the grading. Accordingly, you have a particular grade that is given. And you have the NBA for the program specific accreditation. Ranking frameworks also would deal with the national institutional ranking framework, the teaching, research, outreach, perception, how it is. Besides that, you have the global rankings of QS, THE, and the Shanghai. World class universities is what their vision is about, would become a multidisciplinary institute with research excellence, global collaborations, and flexible curriculum. Lifelong learning opportunities would be there, and also the opportunity to become one of the top 100 globally. Lifelong learning institutional development plan would be dealing more with continuous skilling, upskilling, reskilling, and this would be also with the online platforms. You have the Swayam, sometimes you have the NDL, you have Coursera. You also have a possibility of having a credit transfer and stacking too. So, credit transfer and stacking would be like how you have your academic bank of credits. You can always go on building up your credits, stacking them to know how much you can build up on your credits, and thereby going and learning more and more online through online platforms, online mode. Industry partnership with work integrated learning would mean like you have initially you have to learn with um, you have only dealings with just an internship or so where you learn how to do certain things, and then further on you can also have opportunities to get work at the particular industry, so you already have experience at the particular industry,
and then therefore you can also continue working at that particular point of so. So a summary of this is institutional autonomy and accountability. You have strong governance and participatory decisions, quality enhancement via accreditation and rankings. You have lifelong learning ecosystems. Okay. Now, the main objective and the goals that have to be achieved by IDP, you have to articulate a clear vision and mission to align this with the NEP 2020 NCRF STG and the Institute's educational research activities and social objectives to assess the institutional development needs through wide consultative process. So one has to align with the 2020 NEP 2020 to know exactly where you want to reach, how you will reach there, and how you will become one of the best higher educational institutes, having not just academic wise, but also having research and also with social objectives too. For this, you have to identify the capacity, that is the human, material, and financial organizational gaps based on the goals and priorities. So you have to identify who you can choose, who you can train, which human, which material, which financial way, have what are the missing things that are existing in your particular system presently, and how you will exactly go ahead from there. Okay, so that would deal more with your um, what is missing, that would be your gaps. So that how you would organize that and clear out the gaps, that would be your way of identifying what is your weak point and then filling it up. To develop annual activity capacity building plans to build capacity and remove those gaps. Okay, so we're coming to this in the future slides. To establish a transparent system for holistic and inclusive growth and develop the HEIs through the application of relevant tools and technology opportunities for develop digital technology and also for balanced growth. Next is to establish ethos of holistic lifelong learning and operative framework for better employability and entrepreneurship by integrating skilling into higher education. So one would learn different types of skills in different disciplines to make it multidisciplinary, and also this would be helping you to get a job opportunity, so better employability would be there. Entrepreneurship would help you in the sense when you have an internship with a company or you even have your own startup, you can also have your own business then. Develop an operative framework to promote the internationalization of education, international equivalence, and exchange of faculty and students. All these points I will be coming in detail in the next few slides. So, right now, international of education, you have for faculty visiting from abroad, from out of the state or from out of the country. So, that will have internationalization of education. You have international equivalence where you have your students also having exchange students with another country. So you have not only faculty coming and teaching in, you also have your students going and learning outside, maybe for an internship, maybe for a work experience or so, and then you come back again. And therefore, that would be internationalization. To ensure meaningful engagement of all the stakeholders in the development and implementation of its IDP. So see that everyone is there involved in your planning of this whole institute development plan. To quantify the institute's goal using indicators and time-bound targets and implementation plans. Finally, to indicate periodic reviews and appropriate measures for continuous correction and further improvements. So till here, can I know whether everything is clear with the participants? Yes, ma'am. Yeah, so could you tell me the last point I mentioned over here? Periodic reviews. So, what would happen over there? Okay, I'll just tell you about it. So, in this case, you have to go on asking around the stakeholders or so whether it was fine, whether anything needs to be changed. It means you have to have a feedback. So, once you have a feedback, you know exactly what is required and how you can improve on what is presently happening. Okay.
Hello, Dr. Ingrid ma'am. Yes, yes, yes. Yes. I just wanted to change my slide. That's why I just Yeah, wanted. please continue. So the next one is about the institutional development plan. We have the major components. The major components deal with different enablers. We have the governance enabler, the financial enabler, the funding models. We have the academic enabler, the research and international property rights enabler, the human resource enabler, the networking collaboration enabler, and the physical enabler. Finally, we have the digital enablers. Okay, so this is exactly all the different major components of the Institute Development Plan, the framework. Okay, so coming to the first one, is it more? One moment. Yeah. So we have the first one over here, that is the governance enabler. So this deals mostly, you have the BOG, the Senate, and the syndicate. So this is the board of governance, which has to be a fully functional board. It has to be fully or even majorly staffed, that it has to be having full capacity, and it should have defined roles and responsibilities, and each one has to be accountable for what they are doing. It also has to involve alumni as a major stakeholder. Okay, so this is dealing with the BOG, the Senate, and the syndicate. The next one is the quality assurance. So this is a well-defined process. Processes also have to capture the various aspects of the governance and has to have clear, defined, deliverable, and outcomes. Financial autonomy. Everyone has to strive for self-sustainability. So somehow, as I mentioned, we have to get external revenue coming in. Also, a creation of a chair for research in specific areas. So you have also a chair for research too. Next one is leadership. You have to have effective leadership. So strategic management also is required, how exactly you will do particular things. So you have to strategize everything and laying down objectives and targets. So having a particular objective that will help you to know exactly what you will do and when you will finish. You have to have things time bound. Vision, mission, and roadmap. You have to prepare a vision and mission document. Have an evolved shared vision. When you have a shared vision, that means that not only the leader thinks in one direction, but the leader and its team, everyone thinks in the same direction, and it will be overcome in a better way and faster. If one thinks in one direction and everyone thinks in different direction, it will not reach its final endpoint. It will only be in chaos, not knowing in which direction you want to go in. Okay, so for this, you have to have short term, mid term, long term. That's around 2 to 5 years, 5 to 10 years, 10 to 15 years. That would be like your plans in the documents of what your mission would be like. And for this, you have to have also templates required to be sent out to all the HODs so that they have an idea of what's to be done and how it's to be done. Okay. Close monitoring by IT, a web-based management information system. You have the parameters for performance to be finalized by appropriate committee. Also the source of feedback, the UGC or the AICTE also is there, the guidelines are there. So you have to keep that in mind too. Academic system also should be implemented on priority. Risk management analysis. So we here have a meeting at least once in a year to discuss what possible risks that could take place. It could be a natural disaster risk. It could be a financial risk. It could be a legal risk. It could be a safety risk. It could be any environmental or a hazardous risk. So a meeting needs to be taken to know exactly when and how to avoid a particular risk and what is the analysis presently. External advisory boards. So over here we have to have different academicians, researchers, government officers, industrialists have to be part of the board so that everyone knows exactly what is happening and how things can be done, and accordingly advice can be given on how to improve. Student feedback, again another improvement which can be done through feedbacks of the students so that you have it on a regular basis so that the students can provide you to know exactly what is happening and where is the loophole. Okay, so that is dealing with a governance enabler.
Next one we have is our financial enabler and the funding models, that is resource in generation. We have the first one, that's the financial policies. This would actually outline the roles and responsibilities of all the different university officers, organizationals, financial assets. So what exactly is there in the finance policy? Action plans and budgets. Now in this case you have to have an action plan for all the different lines that you have, and accordingly what the budget is for that particular plan that you are laying down. So have in the first year maybe a very detailed first year plan, maybe every quarterly, every 3 months you know what is happening, and then you have a 5 year plan, what is going to happen in the second full year, in the third full year, fourth, fifth. So you have a full action plan that is happening, and this can be also the income could come in, or the for the budget could come in through the fees as we mentioned, through the grants, through the revenues, through publishing of papers, through research projects. Also, you have to have a person responsible for each. So you have to have clear responsibilities. What are the timelines in which they have to um, achieve these particular goals? So timelines are required, milestones are required. And once you get the funds, it has to be placed in different accounts. So if you're having to spend on a recurring item, then it has to be placed in a recurring account. If it's a non-recurring item, it has to be placed in a non-recurring account. So that therefore you can keep a budget of what is there in your recurring and what is there in your non-recurring. Okay. Accordingly, you can revise and check out how much is spent or what is done, and this will be done in your year meetings or so. Next one is main sources of revenue to be developed. So over here you have the tuitions and the other fees from the students, you have the consultancy fees, you have the government grants, you also have your royalties on the intellectual property rights. Okay, so that is how you will have the main sources of revenues developed. Close liaisons with the Government of India ministries and agencies and other funding and access to the external grants and funding. So over here you have more than 20 ministries of Government of India, they're offering projects and research projects in higher education institutes. So please do take advantage of it and also do apply for research projects so that you can get the revenue inside. So performer of the financial assistance has to be there. A particular committee has to be there, one who can deal with the licensing and all, to see what is the licensing, what's the royalties, what you can get in. Have a template for the R&D, widen the responsibilities of getting grants, try to do interdisciplinary projects that will help you to get the grants. RG scheme in each department. So you have the commercial utilization of existing faculty, collection of the information of the indicating and the strength of each department. You also have the lab equipment and the instruments available for use by external agencies too. So funding will be from external agencies over here. Financial Investment Committee. You have a committee which is responsible for taking the decisions regarding the reinvestments of funds, how you will get by reinvesting in particular shares or so. Having the university assets, having the university policies of the universities agents or the higher education institutes agents. Staff providing financial services. So when you say the staff, you need to have full strength, as we mentioned also in our first one. You have to have the finance officer, the treasurer, the chartered accountant, data entry clerks, the chief investment officer, the accountants, all the different lines of the finance team needs to work together to see that they can do a budgeting and use up and have a good financial enabler. So this is dealing with your financial enablers. Next you have is the academic enabler. So over here you have the courses catering to professional and future requirements. So you have a choice of relevant programs. You have in-depth learning also for students, allowed for them to future growth of the student. You also have the option of having multidisciplinary or relevance of the programs. Curriculum updated as per the industry requirements. So as per what is happening in the industry, you will know exactly what you can add to your syllabus so that after your student finishes, passes out from this institute, they can get a job
straight away in an industry. So have it according to an industry requirement. Also, in between, have an internship so that you make it compulsory for the student to visit industries and have an internship, so that they will also learn what industries want and how much advanced they would be. Curriculum embedded with employability skills. So again, this has to have employability skills depending not just what the industry wants, but also dealing with what is currently being used. So we're in the 21st century, and we are right now in the system of the AI, having machine learning and IoTs, virtual collaboration, decision making. With that, you are also intending to know and develop your communication skills. So that would be speaking skills, your acting skills, your inclusive and diversity, gender sensitization, how you work towards it, quick thinking, decision making, how you can be the best in your way. How you can also have a good business. So you have an entrepreneurship, your customer service orientation, or your job readiness, how you are towards it. Next is curriculum embedded with the skill enhancement courses. So try to have the skills present also in your curriculum. Your skill enhancements could be also in the area of digitalization, say for AI or any of the other skills which wherever the 21st century digital skills are required or so. Curriculum embedded with emerging technologies to be integrated with futures of work. So you have to view foundational technology, fundamental changing nature of work. Some of the technologies could be AI, data analytics. You could have blockchain. You could have cloud computing. You could have 3D printing. You could have virtual reality, augmented reality. Okay, so that would deal more with your future of work. Center for Curricular and Life Skill Development. This should also be a full strength sanctioned course which could be there. In the case of faculty and teaching staff, one must have not just only an experienced staff, but one should also have a qualified. So it has to be qualified for the post, and the faculty has to be committed to it. So it won't be like the faculty joins the department and the next day leaves it, or then talks behind the back of another teacher or so. So it has to be committed, it has to be having good moral values, and regular upgradation of knowledge also is required. So for that, you have faculty development programs, you have refresher courses where you refresh what knowledge you had, what knowledge is existing right now. You also have to be role models to your students, and you can also create projects which will have continuous improvement for yourself. Center for Faculty Development, have internship programs, have exchange programs where you can enhance your skills. Maybe you can have yourself enhanced in different disciplines also, not just your own. Be the best in your stream, also in others too. And it's also appropriate for non-teaching staff also. They also have to be not only experienced, but they also have to be qualified, and they also have to have good moral values. A systematic teaching training process for them also would be good, where you can train also your non-teaching staff so that they also would have an idea what exactly and how exactly they have to do particular work in their line of work or outside. Session-wise teaching plan, of course, we just mentioned it has to have upgraded with your industry requirements with the 21st century. Also upgrade your material which you have, your source of information. It could be in books, hard copy books. It also could be in e-books way. Learning materials, study information. You could have a question bank also, which will help you to prepare your students for exams. Assignments could be online. It could be having applicable type of questions, not just straightforward assignments. And they should be time bound so that your student does not take time uh, thinking or just waiting for the day to come. It should be time bound so that they have to be on their toes and think of something quick. Assessments, of course, could be online, offline. Of course, right now, as you're doing this particular course, the exam also will be online. The assessments also will be online. The corrections will be online. So this will be all
an online kind of demand. You can also have an offline type. Some of the courses are offline. You would also have blended type where it could be both ways. Value added skill enhancement papers. These are for providing professional knowledge. You can be introduced as a skill development based adding paper as step papers, also taught as by professionals. So it would be not just bringing in academics, but it also bringing in industrialists to teach a particular thing for a professional in their own system. Pedagogy usage of technology should be encouraged, and also teaching learning material for PWD also should be made, PWD should be made available. It must be learner centric, and other activities could be developing the additional skills that you have, which is not only your academic or research, but it could be artistic or creativity skills too. There could also be a system where you have a skill where you learn the skill, but not only plain learning. You could also earn something. So you could have a scheme where you have earn while you learn. So when you have a scheme where you earn while learning, then you have a dual advantage where you not only learn a new skill, you also earn some money. That would pose not much of a stress on the parents of a student to give them pocket money for any particular requirements, but also they could earn their own money, and also they could have that satisfaction that I have bought this particular book, or I have bought a particular thing out of my own earned money, but also by learning this new skill too. Flexibility and multidisciplinary, you would also have additional certificate programs across the fields. So you have the flexibility of joining in at a particular time or even leaving a particular course. So you have the flexibility of learning even a 1 year program, getting a certificate, 2 years, getting a diploma, 3 years, getting a degree or so. And you have the flexibility of moving in and out, and also becoming multidisciplinary, having banking your credits too. So you don't lose on anything. You don't lose on your years too. Opportunities to develop and utilize research and innovation skills. So you have different exchange programs, different hackathons, or different competitions where you can motivate your students to take part and increase their competency and their confidence level. In the case of international exposure, you have your foreign faculty visiting. So you also have your exchange of your students going abroad. You can have an international scholarship. You can have international conferences that could take place. So this is how you will get international exposure. So this is dealing with your academic enabler. Research and intellectual property enabler. So here you have quality research. So increased number of intake of students would help to increase the amount of research, and that would help to increase the quality of research, because you have more number of students, better, more thinking, more teamwork, maybe more diverse in interdisciplinary project which could take place, a high quality research project. So this will establish a portfolio approach to research projects, and also to have the research facilities also present in your particular institute. Research oriented experienced faculty members. So try to have research oriented experienced faculty members for the research intensive universities. So this is more for those. You have experienced faculty members who are more dealing with research, and they would help you to do more research in those areas, maybe not in the same area, but also maybe in a multidisciplinary area. API based faculty compensation. So of course, the API system is already happening right now. The staff is encouraged to participate in research innovations. Maybe you have a small competitions, healthy competitions, where you gain your API points and you get an award at the end of the year for being the one faculty who's got the most number of API points or so. Targeted research and collaborative research. You have targeted research can create IPRs and also have international brands based on strategic approach. So you have the IPRs where you have your research being patented, and only you will get the royalty later on also. So you have the targeted research and collaborative, which you collaborate with another industry or with another institute.
more PhD and postdoctoral research scholars. So you have to have more PhD students, so more faculty getting more and more PhDs under your guidance, and more postdoctoral research scholars too. So they don't have to stop at only PhD; they can also do their postdoc. So have your facilities in your institute increased so that you can also encourage your students who have also done their PhDs to do postdoc too. More faculty members with PhD. Of course, there are many faculties who have not finished their PhD, so that there is not possibility to guide the students who want to do PhD. So first of all, please complete the PhD and therefore be the institute with 100% faculty have members having PhD. So have a strategy to proportionate the number of PhD holders among the faculty, and try to encourage the faculty to complete it by having some kind of again another competition or so, where you are awarded at the end of the year, those who are finishing, and then also you get some benefits too. Faculty encouragements for book publications, research publications, and patents. Faculties are encouraged to write books, to publish papers, and of course patents, and that will also help in your overall NAC score too. More conferences, at least 2 conferences per college per year. You have at least each one does 1 or 2 per year. That would build up into a large number of published papers per institute, thereby getting your institute to be the best institute in the particular place or country. Student involvement in research. So involve your students, help them to be like project assistants, to be like project fellows, research assistants, and they also would help you to publish papers, and you also will get a paper along with them too. Industry and institutional collaboration and consultation. So if you have something within industry, then it would be more of research with the industry. So it would be more that it would be having a collaboration with the industry. So the industry, it would be more industry based, and opportunities for the revenue to come in would be better. University incubation centers, these are for students who want to start up their own business after finishing their graduates or postgraduates. Incubation centers would have you working on an idea and exactly how you would go ahead with it. They would first of all give you a startup money, and then you can go and build up your own business plan accordingly. University publishing through its own press. Your university is encouraged to have its own publication system so that you can then publish through your own press and maybe have your own publication house. Online digital are also one of the significant of the top colleges. University publication and citation services. So you have the citations of the different stakeholders, the academic members, target patents claim for the UG and PG in the professional subject area, setting goals for the undergraduate or the graduates in the internships, and regularly mentoring or supervising what exactly and how exactly they're doing it. You can have patents over there too. Faculty ranking annual systems. So as I mentioned, you can have a winning spirit. You can have what exactly, how high you can get your APIs by the end of the year or by the end of 2 years. Have a a healthy competition among the faculty such that the whole institute benefits and not only just the faculty. The CTO research monetization, you could have a centralized office which looks after the research, which would help you to maybe register into the system, to help you to file your patents or to help you with the licensing. You could have IP protection. So you have this particular research body which will help you out. They also have a technology transfer office also with the experienced professionals to help out too. Value added skills enhancement. So this would have a skill that will help you offered as a separate paper maybe, or taught by a professional in an industry.
Other activities could be developing your additional skills in your team skills, maybe all-rounder skills. Also, you could help the students who are financially weaker in them. So in that case, also you could have a system of earn while you learn and flexibility too, so that they can maybe study a year, earn while learning a course. Maybe they wish to earn outside, they can also bank their credits and then they can come back also. Flexibility multidisciplinary. You have additional certificate courses. You have also your MOUs that you can sign up with other institutes, or you could sign up with another industry also. Opportunities to utilize research and innovative thinking. You could have students encouraged to work either individually or they could work in a team. Of course, when they are working in a team, everyone has to have like a shared vision. Everyone thinks alike and they work towards a common goal. Okay, so have the support of raising knowledge and the skills and the attitudes, and also organize hackathons or have competitions. Also, you could organize overseas exchange programs. As I mentioned, you can have faculties visiting, or you could have even based on research, you would have your students exchange with another university for a couple of months or so, and then they can get back ideas from another country, know how it is. Okay. Coming to the next one, we have the human resources and the supportive facilities. Enablers. You have the student and learner enabler. There would be the holistic admission framework. You'd have the merit and the equity. How exactly you would have to deploy merit-based scholarships and financial aids to the students. Also, you have a robust academic advising or a mentorship among them. Dealing with the staff empowerment enabler, you have to adopt a way of having recruitment opportunities to institutional goals. You could also have to establish clear pathways of career, how exactly it would be to encourage the staff's growth, satisfaction, and retention so that they will not move or transfer out. Faculty and research enabler would be transparent recruitment and appointments. You have research expertise, a faculty with more research or so, depending on the maybe educational background or depending on the pedagogical skills. You would have a transparent recruitment to employ your faculty and research enablers. So you have a tenure of which would help in diverse achievements in teaching or even research or service or even engagement to the faculty to provide long-term career. Cross-functional, you have the recognition and the reward system, as we said. You could have a reward for the faculty. You could also have a resilience and a well-being program where you have the well-being of for all the members of the higher education community and leadership opportunities too. In the case of strategic funding and emotional support enabler, you have to embed and support your networks to aid the students and the staff and the faculty in working towards the demands with resilience, and promote teaching excellence with specialized fellowship programs with innovative curriculum based on the educational technology. For this, you have to have accessibility or proximity of being a leader and having access, approachability of a leader towards what you want to have. So this would deal with your human resources. Next is you have to have rich communication, the communicate with your peers, with your higher authorities, be a role model to your students, to the others in your department, in your institute. Have institutional values, have a good vision and mission, strategize what you are planning to do, and have a good goal. Okay. Next, coming to networking and collaboration enablers. You have the first one, the strategic collaboration, that would deal more with your how to get your income in, how to support your alumni, how to build up a rapport with your alumni,
how to have a mentorship for your students, how to have a partnership with the industrial, how to sign MOUs with other industries or other institutes. So that would deal more with your strategic collaboration. In the case of academic and research excellence, that would deal more with cross institutional synergies, your research collaboration on how exactly you would collaborate by being the co-author, by having library access, by having papers, e-papers or so. Practical exposure and experience, you have what you are learning theoretically has to be also done practically. So you have practical exposure of having hands-on experience of what exactly can be done. You have earn value learn. So you are learning it practically, not just theoretically. Community engagement and services would be more dealing with collaborating with an NGO, with a social service for outreach programs, having a civic partnership to build sustainable development, and also have professional development placement networks. So you have your different industries that you could have your placement, job placements. You have your alumni who could help you also to build and have placements. Quality and credibility, have accreditation and certification, also quality assurance of developing how to have a different framework. Innovation and entrepreneurship, we want to mention that start having your own startup system, you can have your own business and therefore you can start your own entrepreneurship. Innovation of your own new idea, you can apply for grants and then you can also have your own project where you can write your papers and innovate a new product. Okay. Coming to physical enablers, you start with a smart campus. So you have a best balance of cost, comfort, and risk. You have it smart where it would detect problems initially, and before it becomes bigger problems, it would also have different systems talking to each other. So you have the lighting system, the security system, the environmental control system. Also, you have maybe greenhouse effect. You have different green sustainable buildings. So you have the on campus, you have it in an open environment or so. Using green energy, you harvest all your energy, you have your water energy, renewable energies like air, food, water, light, providing all these um, in an organic, in a clean way, in a green way. Also, you could have like a centralized AC system where you don't have individual AC, so you have a centralized AC. So therefore, you have a clean, green environment. Infrastructure to compute. So you have better infrastructure with signs on the roads, especially for the differently abled also. You could have electric vehicles, or you can even have pathways for walking. So you do not have air pollution or noise pollution, which is like more where you have the other vehicles which do so. Next is administrative block. Try to have a centralized administrative blocks individually. Also, you could have in your other departments because this would be a huge campus. So you have a main administrative block in the center, which would also have admission and also for counseling too. The faculties also could have individual um, smaller administrative blocks in their individual departments so that they could also deal with the main administrative block through maybe e-office way or so. Library and Digital Resource Center. Again, you could have a centralized library block where you have the stock of journals, books, and they would not only deal with hard physical books but also with e-books too. Lecture complex classrooms should be have accessible to all the students. They should have different classroom as per the size of the demand. Tutorial rooms should have the video recording facility. Examination branch could have one with a confidential where the papers are set and kept in there. Facilities to faculty and staff, have facilities to faculty, which would be a campus of a 2-3 bedroom facility for the staff. Have meeting rooms as per the size of the meetings that is required, not large meetings for smaller number of staff.
Office rooms should be able to meet the needs of the office members. Laboratories should be highly equipped with the modern facilities. It should have also research centers which would require the basic requirements. Computer centers should be appropriate, having the student ratio of maybe 1:1 or 1:2. Multimedia studios also having digital content, sound control and recording facilities. Catering, dining, mess should have facilities for you to have and prepare your own food if you wish to do so in a hygienic condition. Games and sports facility, playground could be not only external, but it could also be an internal gymnasium or a workout center or a swimming pool or a stadium, internal stadium also. Auditorium come at conference rooms could have, depending on the size, like the meeting rooms. Hostels should be not only for students, but it could be also for research scholars, also for your um, other international students too. Parking should meet the requirements for everybody. Of course, try to have the parking and then moving around in your e-vehicle or walking ways so that you have less of uh, pollution. Exhibition halls, in case you have any extracurricular activity, artistic or creativity, one can exhibit their talents in that particular exhibition hall. Guest accommodation should be for good stars, so you can have your guest house meeting the basic requirements, and accordingly, the guests can stay there. Commercial shops, centers, bank, um, laundry, uh, a horticulture, a stationery shop, what commercial shops would be required, the basic requirements should be there on campus. Health and well-being would mean more right, have a 24 by 7 facility, have an on-campus doctor, have not just a doctor for physical health, also one for mental too. So you have student recreation facilities so that the student, those who are staying on campus also have some facilities that they can do without missing home. International student centers, you have the amenities for the students, for the international students. Incubation center, as I mentioned, somewhere where you can start up your own entrepreneurship. Botanical park is where you can have a document collection of all living objects, living plants. And vocational training and infrastructure would more dealing with what you can do to upgrade your skill, your computer labs, your technology labs, vocational, it could be a part of the course curriculum too. Finally, we have the digital enablers, which we, with your internet usage, you have the electronic devices for all the stakeholders. You have your website, which is with you all, where you can publish everything on your website. Of course, you can even have some blogs where you can also message not just vertically, but also horizontally. You have your online messaging system. Of course, right now we have the WhatsApp, but also you can have something which is off the higher education system. Wi-Fi campus, see that you have Wi-Fi present in all the in the entire campus. It shouldn't be weak in a particular point or strong in a particular point. It should be equally distributed everywhere. Online study material where you have it in maybe you audio form, in video form, ebook, or maybe also online study material should be available. A digital library having not just um, should have not just on-campus accessibility, but also remote access. Digital publication would mean to have the university having, as you mentioned, its own publication system. So one would have a digital publication where one can also publish in your university publication system. Paperless office is like an e-office where you don't have to actually go from one administrative block to the other to the main administrative block, but you could send it over via e-office, thus thereby saving paper too. Paperless exams, you'll have the digital exam, which you're going to answer in a couple of days. Online evaluation would take place after that. So that is something like what would happen in future, which happened, yes, of course, also a couple of years ago, and which was happening, and it does still continue to happen in NEP programs. Web-based result would be having your results
published online in your university, but it would be only you having access to it, because you would have the password to open your particular result. NAD marks card would have a digital academic depository solution, online admission test to have the global admission, education ERPs to have integration with the different departments and exchange of information. You also have the plagiarism software facility, where you have a full right of checking out your similarity check, and there will be no limits to it. Online digital magazine, as I mentioned, you can publish it in your digital magazine. Online placements, having an internship with an industry, not just actually visiting it, but you can also have it in an online way. Video documentation of each and every college, video documentation in the public platform, so you know it through social media. Also promotions, you also have the studio for video online classes or even an online publication system. Okay, so this is your entire major components of the IDP activity. And just give me one moment, I'll play one video for you. For this, I'll just stop sharing my screen. But it's a bit slow. Hello. Yes. Ma'am, I'm sorry, I just got Yes. If left you're out of the having, meeting. Yes, okay. and can I ask a question? Dr. Ingrid ma'am, I think the participants is asking the question. If you could allow. Yes, please. Yes. Yeah, ma'am, please, ma'am. I didn't. Ma'am, this Yes. session you provided us with the theoretical knowledge of all the institutional development plan, but I wanted to ask if, for reference, is there any institution that has already followed this IDP and have successfully fully converted their curriculum and their I process actually into the one I wanted required? to ask you all the question, because I'm waiting for more interaction with this class, to say how many have actually implemented it in your institutes, because something like our university has done so. So I wanted to know actually how many others have implemented most of these also in your particular institutes. Yes, ma'am. Actually, in the Maharashtra, right now, before couple of 2 or 3 months after releasing the guidelines from the UGC, the most of institutions, the government, according to the government directives, most of the institutions have started to implement this development of this IDP. And what happened? The government of Maharashtra has also directed that this IDP should be integrated with the Vikasit Maharashtra vision. So there could be some kind of similarity in the both documents. So all the institutions are under pipeline to prepare this plan, because we have to align with the vision of this Vikasit Maharashtra that has been vision by the Honorable Prime Minister sir, on the on the line of Vikasit Bharat. Yes, ma'am will sharing some video. Ma'am, please. Yes. Just want to finish off with this last Yeah, video. ma'am, That's please. fine. Yeah. Every educational institution has a social mission as well as an academic mission. The social mission includes providing equitable access to high quality education and preparing the graduates to successfully perform their roles in various professions that they will take up after passing out of your institution. So, how do you meet the mission of your institution? The academic mission includes focusing on academic excellence, research innovation, leveraging the digital technology in education,
making the education more meaningful in the lives of your students, international collaboration, and so on. How do you make sure that you achieve the mission goals set for your institution? To achieve this goal, every institution has to prepare an institutional development plan. UGC has recently announced guidelines on preparing the institutional development plan. This is a general framework using which every institution can prepare an institutional development plan unique to their mission. These enablers include academic excellence enabler, research innovation enabler, capacity building enabler, physical infrastructure development enabler, digital technology enabler, and so on. As a leader of the educational institution, don't you think it is time for you to develop an institutional development plan to take your institution to the next level? Please do read our UGC guidelines on institutional development plan and prepare a roadmap for your own institution. Yes. That gets me to the end of my session. Yes, participants, if you have any questions, then we can take the questions, and then we will continue for the next session. I think our next expert has joined with us. Sir, the same one. I wanted to know if an institution that has already developed and put into action all of these plans. So the Uh, developing yeah, institution that I should look up to. Kritika ma'am, I will just put down here. Before a couple of days, when we are discussing with the similar modalities of this institutional development plan, one of the experts from Hyderabad Technological University, state Telangana, the university has already developed such kind of plan before the issuance of the guidelines of UGC, because they are very closely working towards this NEP as being the autonomous institution, and they have developed such kind of plan, I think 1 year before, and their plan will be available on their website. But what are the inputs? Right now we don't have any kind of inputs from their side, so we cannot tell anything on that. But definitely you can, if you visit the Jawaharlal, that Hyderabad Technological University website, on that website you will find such kind of plans there. Maybe Delhi University has also developed or the in the process of the developing. So if you could search kind of search different universities or the institution with imminence, you have find such kind of plans there. But right now we will not say how it will be impactful and how the targeted that has been mentioned in that particular plan that have been achieved. We certainly do not say or comment on that particular things. Yes, is there anyone? Okay, sir. Thank you. Anyone else has any questions? Like a checklist what I have done right now, so you all can also think about where you have what you have not yet implemented. You all can also implement. You can think about having your meetings and thinking about how you all can implement it also. So there might be some things which have already been implemented. There might be many things which have not yet been implemented. So you will actually go and check out to see where you can improve, where are the gaps, and how you can actually do so. Yes, ma'am. This is one of our autonomous institutions. They got the autonomy by the UGC, and they are doing very well in the region because being the engineering college. They have got the recently autonomy, and they have formed the board of governance as well as their institutional mechanism, whatever the BOS may require. And couple of days before, the nomenclature of their subject was changed by the approval of the academic council of the university. So they are doing on that line particularly, but it may take some time. Okay. Yes. So can we conclude, ma'am, if you could permit? Yes. So on behalf of the organizers and Karge Baba Amravati University through its Malvi Mission Teacher Training Center and Jawaharlal Darda Institute of Engineering and Technology, we
we express our heartfelt gratitude and sincere thanks toward Dr. Ingrid ma'am for such a valuable session. Ma'am, you have provided insightful, valuable things towards the development of this institutional development plan and the insights of NEP. We are really thankful to you for such an insightful and wonderful session. And with the kind consent of Dr. Ingrid ma'am, I would like to declare that this session will be over here. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. And I would also like to thank the director of Sant Garge Baba Amravati University, Professor Atik, for giving me this opportunity to deliver this session. Thank you so much. Thank you everyone for patiently. Thank you, ma'am. Thank you. Hello, Dr. Bedra sir. Professor Bedra sir. Yeah, I'm here. Yeah, good afternoon sir. Good afternoon. Good afternoon. शुरू कर सकते हैं सर? जैसा आप चाहें. Participants, before starting the session, because the session is highly interactive, and I would like to request all the participants to please start your videos, because without video it is not possible for the interaction. Sir, if you want some 5-minute break, you can have that also. Sir, I think what happens at the session is already we have covered the tea break before commencement, before the ending of this session. So we will continue for that, sir. As you wish. Yeah. So participant, please start your videos. Couple of participants at least, please start your videos first. Without that, we cannot start this session. I will request all the participants to please start your videos first. Okay, so good afternoon one and all once again. As I have already told you that the today's session has been split into the two different parts. First part we have almost completed, that how our institution will develop and whatever may be the plan, whatever what we have to do, we are discuss on this modality. But now the another part and very much important parts, friends, you know that the institutions are depending upon the students, and this policy is the student centric policy. So one of the important target that has been targeted by this policy, that achieve the GER, gross enrollment ratio, 100% by 2030 in the school education and 50% in the higher education by 2035. It is one of the important aspects and the objective of this national education policy, and therefore the student diversity and the inclusive education has been inculcated in this flagship program. So we will definitely speak in this session, continue to the second session on the student diversity and inclusive education with the help of one renowned expert and the professor, director Dr. Bedre sir. Sir, I extend my warm welcome to you to this particular session and to this program. Friends, Professor Bedre sir is also the professor and the director at this Malvi Mission Teacher Training Center at Dr. Hari Singh Gaur, a central university situated in the Sagar, Madhya Pradesh. Being the director, he has also the similar responsibility on his shoulder to sensitize and make aware the faculty member towards adoption and the implementation of this national education policy. Sir is basically belongs to the faculty of humanities, and he is particularly from the Maharashtra with the subject of English, and he has more than the 2.5 decades of experience in this field of higher education. I think recently sir has posted on his status, WhatsApp status, he has completed the 25 years. So on behalf of all the organizers, sir, we appreciate your service rendered in this field of higher education and your experience, sir. 29 years, sir. 29 years, near about 30 years, 3 decades of experience in this field. Before joining the Sagar, sir was the principal at Gangakir College, and sir has lot of experience in this field of higher education. So I will not take much more time, sir. I again extend my warm welcome to you. Now may I request you to please start with your session, sir, please. Thank you. Thank you very much. You also, and at the same time, Professor Atik Sahab, other staff members of MMTTC Amravati, and all the distinguished participants of Jawaharlal Talda Institute of Engineering and Technology, with which or with whom you are conducting this program.
organizers made request to the participants to open their video cams, but I think the participants seem to be busy in some more important work than this. Again, on my behalf or on my part, I would request some of you to please open your video cams, at least some of you. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप में से कुछ लोग अपने कैमरा ऑन करें. यस, थैंक यू कृतिका मैम. या दिव्यांग जी, एक सेशन मध्ये आहे 5 वाजता एक काम. पहिले तुमचा बरोबर राहील आपल्या भागासाठी. सॉरी. अब अच्छा लग रहा है कि some people have opened their video cams without having somebody before me. मुझे बात करना मतलब संभव ही होता नहीं है. हम सब क्लासरूम टीचर्स हैं. हम सब लोग जानते हैं कि ऑनलाइन मोड कितना टेडियस होता है, कितना टायरसम होता है, कितना बोरिंग होता है, एंड समटाइम्स डिसइंटरेस्टिंग ऑल्सो. लेकिन उसको, उसकी बोरिंगनेस, उसकी टेडियसनेस we can reduce if some people are there with whom I can interact, with whom or in whose eyes I could see. है ना, चेहरा देखना अच्छा लगता है, और फिर ऐसे ऐसे खूबसूरत चेहरे सामने हो तो फिर और अच्छा लगता है. तो वी कैन कंटिन्यू इन द सेम. तो मेरा काम ऑर्गेनाइजर साहब ने बहुत आसान कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अपने लिए फाउंडेशन बना. मुझे लगता है कि when this program started, in the first session, you all people must have been informed why we are conducting these programs. क्योंकि विवेक जी, मुझे भी लगता है कि बिना मंजिल के हमने सफर नहीं शुरू करना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन क्यों जा रहे हैं इसका पता नहीं चलना चाहिए. अदरवाइज द एंटायर जर्नी विल बी फ्रूटलेस. आप सब जानते हैं कि 2023 के सितंबर महीने के बाद यूजीसी ने एक मिशन मोड में इस प्रोग्राम को शुरू किया है, और इसका उद्देश्य मात्र इतना था कि हमारे उच्च शिक्षा में जो लगभग 16 लाख टीचर्स काम करते हैं, लगभग 16 लाख, तो नंबर में भी मोर और लेस, अलग अलग प्रकार के शिक्षक हैं. प्रोफेसर है, डायरेक्टर्स है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट्स है, एडॉक बेसिस पे है, कॉन्ट्रेक्चुअल पर है, टेम्पररी पे. ऑल टीचर्स taken together, the number reaches almost 16 lakhs. और यूजीसी ने ये डिसाइड किया, या मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि हम 3 सालों में we will orient and then sensitize all the teachers about NEP 202. अब फिर ये सवाल बनता है कि क्यों ये जरूरत पड़ी, ये उसके पहले का समय. हम सब जानते हैं कि this policy was made open for implementation in 2020. जैसे उसका नाम ही है NEP 202. उसको 2020 में हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए ओपन किया, लेकिन 3 साल जाने के बाद जब अलग अलग स्टेट अपने अपने तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने लगे, तब गवर्नमेंट को शायद ये रियलाइजेशन आ गया कि जब तक हम अपने सारे टीचर्स को एनईपी को लेकर फुली तरह तैयार नहीं करते मेंटली, देन इन द डोमेन लेवल, सो then only we will be able to achieve the targets. फिर बात आई मॉडलिटीज की. अब ओरिएंट और सेंसिटिव करना मतलब करना क्या है. आप सब महाराष्ट्र से हैं, मैं भी वहीं से हूं.
तो आपको पता होगा कि हमारे देहातों में कभी कभी वो सप्ताह लगता है ना। कभी कभी तुकाराम का गाथा का लगता है, कभी ज्ञानेश्वरी का लगता है, कभी भागवत का लगता है, सप्ताह लगता है। वो 6-7 दिन चलता है। उसमें होता क्या है कि बस कोई ग्रंथ है, उसी पे बात हो रही, उसी पे बात हो रही, उसी पे बात हो रही, उसका ना बिगिनिंग होती है ना एंड होता है। स्पीकर के दिमाग में जैसे आया, वो भी कीर्तनकार महाराज जो भी हो अपने तरीके से चलाते हो। ये ऐसा नहीं, इसमें एक्सपेक्टेड ये बिल्कुल नहीं था कि एनईपी का डॉक्यूमेंट अपने सामने रखे हम और सारे लोग एक साथ उसका पठन पठन करें, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं। तो उसके लिए एक प्रोग्राम दिया गया, एक बुकलेट दिया गया, और उसमें ये डिसाइड हुआ कि एनईपी 2020 के जो मेजर पार्ट्स है, मेजर कंपोनेंट्स है, हम इसको कहेंगे मेजर एलिमेंट्स है, ऐसे 8 मेजर एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया गया। दिव्यांगी जी, आप मुझे बताएंगे ये कोर्स शुरू कब हुआ है? दिव्यांग मोरी जी, आप मुझे बताएंगे ये कोर्स शुरू कब हुआ है? शायद ही इज नॉट ऑडिबल। विवेक जी, आप बता पाओगे शुरू कब किया है हमने ये कोर्स को? मतलब ये अभी का एफडीपी की हाँ, बात कर रहे हैं कि ये एफडीपी शुरू कब हुआ है? 4th? 4 अगस्त। चलो, तो आज 7 मतलब थर्ड डे है ना? Yes, sir. राइट। Yes. तो हमने देखा कि इसमें लगभग 8 मेजर थीम को प्रोमिनेंस दिया गया है। पहला हम देखते हैं होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, फिर बात करते हैं हायर एजुकेशन एंड सोसाइटी की, फिर बात करते हैं गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड एकेडमिक लीडरशिप, फिर बात करते हैं हम स्टूडेंट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, फिर बात करते हैं हम R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर यूज ऑफ ICT, फिर स्किल डेवलपमेंट, एंड फाइनली मेरे ख्याल से वन मोर आई एम मिसिंग, एक मिस करो, IKS, यस IKS इज देयर। तो ये 8 मेजर कंपोनेंट इसमें आइडेंटिफाई किए गए और ये डिसाइड हुआ कि हम रोज 90 मिनट के 2 सेशन में इस मेजर थीम पे बात करेंगे। मतलब एवरी थीम इज गोइंग टू हैव 2 सेशन ऑफ 90 मिनट्स। और उसी कड़ी में, उसी सीक्वेंस में, टुडे आई एम विद यू और टुडे आई एम बिफोर यू टू डिस्कस diversity of the students and inclusive education. अब देखो सर, इसमें 2 बातें हैं और there are 2 parts in this title. एक है डाइवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फॉर डाइवर्सिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड दूसरी बात है यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब देखो, मराठी में इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, समावेशी शिक्षण। इंक्लूसिव मतलब the education which includes all, taking into consideration what their needs are. देखो, हम सारे लोग महाराष्ट्र से हैं, हम वहाँ का स्कूल एजुकेशन भी देखते हैं। शायद सर को पता होगा कि स्कूल लेवल पे ऐसा है सर, ट्राइब के लिए अलग स्कूल है, एससी के लिए अलग है, समटाइम्स ओबीसी के लिए अलग होता है। नया नया स्कीम निकला था, SC ST निवासी शाळा, ओबीसी निवासी शाळा, और समटाइम स्कूल फॉर फिजिकली हैंडीकैप पीपल, समटाइम स्कूल फॉर माइनॉरिटी पीपल। वहां क्या किया गया है, अलग अलग डाइवर्स ग्रुप के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन उच्च शिक्षा में ये नहीं चलता। प्लीज रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर, आपको पूरे महाराष्ट्र में एक भी उर्दू सीनियर कॉलेज नहीं मिलेगा। प्लीज रिमेंबर, हमें उर्दू स्कूल मिल जाएंगे, प्राइमरी स्कूल मिल जाएंगे, हाई स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन आपको उर्दू सीनियर कॉलेज नहीं मिलेगा। हाँ, उसका मैनेजमेंट हो सकता है जिसका स्टेटस माइनॉरिटी का है, लेकिन ऐसा कोई एक्सक्लूसिव कॉलेज नहीं होगा जहां सिर्फ उर्दू में बात होगी, या सिर्फ वहां मुस्लिम बच्चे होंगे, या सिर्फ या SC ST के बच्चे होंगे, या फिर EWS के बच्चे होंगे। ऐसा नहीं होता। या फिर ओनली फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होंगे, या फिर हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं दिव्यांगजन होंगे, डिसेबल्ड। ऐसा नहीं होता, बिकॉज द हायर एजुकेशन इज इंक्लूसिव। यहाँ
अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था करना एक्सपेक्टेड नहीं। So in that sense, we are using the word inclusive education. अब एक ही क्लास में सारे लोगों को, बच्चों को ध्यान देना है, ये थोड़ा हरकुलन टास्क है, ये थोड़ा बहुत मुश्किल। बट उससे पहले हम ये देखेंगे ये डाइवर्सिटी होती क्या है, या फिर हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सेटअप में, प्रेजेंट हायर एजुकेशन सेटअप में हम कितने लोगों को इंक्लूड कर पाए हैं और हमारा टारगेट क्या है। जैसे कि शुरुआत में ऑर्गेनाइजर जी ने कहा कि हमें बाय 2035 वी हैव सेट आवर टारगेट ऑफ रीचिंग एट 50% GR। तो हम उसकी बात करेंगे इन दिस सेशन। आई विल हैव 3 थिंग्स बिफोर यू। मैं आपके सामने 3 चीजें रखूंगा। नंबर 1, अभी हमारा स्टेटस क्या है, हम कितने डाइवर्स ग्रुप को किस हद तक, किस लेवल तक हमारे उच्च शिक्षा में इंक्लूड कर पाए हैं। दैट इज फैक्चुअल थिंग। मैं आपके सामने एक फैक्चुअल पिक्चर रखने का प्रयास। दूसरी चीज होगी कि एनईपी डाइवर्सिटी को इंक्लूड करने के लिए क्या क्या कदम उठाने के लिए हमें कहती है, व्हाट प्रोविजंस आर देयर टू इंक्लूड more and more people there. And third, in the third part, I will be also talking about what challenges are there. देखो, मुझे पता नहीं कि बाकी स्पीकर किस प्रकार बात करते हैं ऐसे सेशन में, बट लेट मी टेल यू, मुझे लगता है ये जो एनईपी का डॉक्यूमेंट है, जो 60-62 पेजेस का, उसमें हायर एजुकेशन के 20-21 पेजेस हैं। ओनली 20 and 21 पेजेस आर देयर, नॉट मोर देन, बिकॉज स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, ऐसी 3 चीजें हैं। तो उच्च शिक्षा के हिस्से में सिर्फ 20 या 21 पेजेस आते हैं। इस डॉक्यूमेंट में ये एनईपी उच्च शिक्षा में डाइवर्सिटी को इंक्लूड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसकी भी बात करती है। ये पॉलिसी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी लगती है। We are all happy when we complete the reading of the policy document. But remember, implementing it on the ground, on the field, is not so easy as it appears. वो जैसे दिखता है उतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं इसमें जो कुछ इश्यूज हैं, एक मिनट सर, नमस्ते। Sir, you are muted, sir. Please unmute yourself, sir. Bedre sir, you are muted, sir. Please unmute yourself, sir. Now, Yes, sir. Yes, yes. Now we will. okay. अरे अपने आप कैसे म्यूट हो गया? मैंने तो फोन लेते हुए म्यूट नहीं किया था। एनीवे, थैंक यू। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई व्हाई डू वी नीड एक्सेस टू ऑल। अब विवेक जी शायद मेरी उम्र के हैं, मे बी अर्ली 50s, आई होप। उम्र नहीं पूछनी चाहिए सर, फिर भी मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि वी आर इन द अर्ली 50s। Yes, sir. और हम जानते हैं कि आजादी के 75-77 साल निकल चुके हैं, है ना।
और हमने जो 75 सालों में जो कुछ भी हमने पाया है वो पीरियड के हिसाब से बहुत अच्छा है, बिकॉज 75 year period is not that much in the history or in the life of a nation. तो वो भी आजादी के बाद, क्योंकि हमारे साथ जितने भी देश आजाद हुए हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में, उनकी स्थिति हमसे अच्छी नहीं है. तो इन दैट कंपैरिजन व्हाट वी डिड इज नॉट सो बैड. और तब भी जब देश आजाद हुआ सर, तो हम जानते हैं कि हमारे पास लिटरेसी का रेट क्या था, है ना. हमारे पास आईटी इंडस्ट्री को लेकर हमारे हालात क्या थे, हमें अंग्रेजों ने कैसा पूरी तरह बर्बाद करके छोड़ दिया था. तो ऐसे हालात में विद लिटिल रेट ऑफ लिटरेसी वी डिड मच. फिर आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि भाई अगर हमने बिना ज्यादा लिटरेसी के भी इतना किया है, तो फिर अब हमें सारे लोगों को शिक्षा देने की जरूरत क्या है ना. अभी भी हम 28-29% तक की है, तो क्यों हम जिद कर रहे हैं कि सारे लोगों को हमें शिक्षा देनी है. सर प्लीज रिमेंबर, we should not forget that education is for employment only. हमें बिल्कुल दिमाग से निकालना है कि एजुकेशन विद एम्प्लॉयमेंट ऐसी बात नहीं है. वी नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेट सम वैल्यूज देयर, कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेट सम गोल्स देयर, और उन गोल्स को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारी सारी मतलब क्या कहते हैं जनता या हमारे सारे सिटीजन एजुकेटेड. साथ ही साथ सर हम एक बात सुनते हैं हमेशा जी, दिव्यांग जी, एक बात हम बार बार सुनते हैं कि इंडिया इज द कंट्री वेयर वी हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यंग पीपल. मतलब दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी हमारे पास. दैट इज व्हाट वी से. मेरे ख्याल से विवेक जी अकेले मेरे पास बच्चे, बाकी सारे लोग निकल गए शायद. गॉड नोज वेयर दे हैव गॉन. यस, यू आर अलोन हियर सर. चलो आप भी अकेले, हम भी अकेले, कोई बात नहीं. कभी कभी बीच बीच में मोरे साहब आ जाएंगे कंपनी देने के लिए. है सर, कुछ लोग हैं अभी. लेकिन यहाँ मैं सिर्फ फ्रंट पे दोनों लोग, मतलब फ्रंट लाइनर जो है, लड़ाई करने वाले सामने जो दो है, वो आप दोनों हैं. ठीक है तो सर. लेट दैट बी. आई विल टेलिंग यू दैट कभी कभी हम कहते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी हमारे पास, हम जिसको कभी कभी टेक्निकल वर्ड में डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कहते हैं, है ना. लेकिन सर इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड ऑल्सो एंड इट इज अ मैटर ऑफ वरी ऑल्सो. अभी वरी दो मामले में. एक, आज हमारे पास सबसे ज्यादा युवा आबादी, इसका मतलब एक वक्त के बाद हमारे पास सबसे ज्यादा सीनियर लोग भी होने वाले हैं. दैट इज ट्रू. अब विवेक जी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई युवा इस वर्ड की उसका क्या बोलते, उसको कैचमेंट एरिया है क्या, कौन से लोगों को हम युवा करेंगे. अब जैसे कि विवेक जी हो सकता है कि अर्ली 50s में, लेकिन ही इज एनर्जेटिक. बट फ्रॉम द एज पॉइंट ऑफ व्यू, द पीपल और द पॉपुलेशन लाइंग बिटवीन द एज ग्रुप 18 and 40, 18 से 40 के एज ग्रुप में जो आबादी होती है, हम उसको युवा आबादी कहते हैं. और हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है. एंड as I told you one worry that they are going to be old also. लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये आबादी, ये युवा आबादी अगर काम करने वाले आबादी बनती है तो दैट इज एन एसेट टू अस, इजंट इट. अगर ये सबसे ज्यादा युवा लोग अगर काम करने वाले लोग बनते हैं, if we can convert them into workforce, then they are an asset to us. But if they just remain idle, workless, then they are liabilities. एक हिंदी में वर्ड है सर, खिलाने वाले हाथ और खाने वाले हाथ, दोनों में बहुत फर्क है.
खिलाने वाले हाथ और खाने वाले हाथ। खिलाने वाले हाथ मतलब जो आदमी बाहर जाता है, कुछ काम करता है, 4 पैसे कमा के लाता है और वो खिलाता है, दैट मीन्स दैट पर्सन हैज कन्वर्टेड इनटू अ वर्कफोर्स। लेकिन आपके घर में 3-4 बच्चे हैं इस एज ग्रुप पे, उनको कोई काम नहीं है या वो कुछ काम कर नहीं सकते, काम नहीं भी है और कर भी नहीं सकते, तो दे आर सिटिंग देयर। अगर जिंदा है तो खिलाना पड़ेगा उन्हें, हमें उनको तो खाना पड़ेगा। तो ऐसे हालात में दे विल बिकम ईटिंग हैंड एंड दिस ईटिंग हैंड विल बी लायबिलिटी टू अस। अगर ये लोग सिर्फ बैठकर खाने वाली आबादी बन जाते हैं तो ये हमारे लिए एक बोझ है, ना बल्कि हमारी संपदा है। तो ऐसे हालात में इस आबादी को वर्क फोर्स में कन्वर्ट करने का काम हर एजुकेशन करता है। स्कूल एजुकेशन में ये नहीं किया जाता। प्लीज रिमेंबर, स्कूल एजुकेशन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेसी डेवलप करते हैं। आज हमारे स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, किसी भी स्कूल में जो 12th तक चलता है उसमें कोई भी काम करने की शिक्षा आपको नहीं देती। एंड थर्ड थिंग लेट मी टेल यू कि भाई ये जो आबादी है, ये जो हमारे युवा लोग हैं जो उच्च शिक्षा के से बाहर है, वो किसी एक ग्रुप में, एक धर्म में, एक जाति में, एक समूह में, एक प्रांत में, एक भाषा में नहीं। All these people are called socio-economically disadvantaged groups, SEDG। ये वर्ड शायद आपने बार बार सुना होगा, SEDG, सोशियो-इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। ये सोशली भी डिसएडवांटेज है और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है। तो ऐसे कारणों के चलते ये सारे लोग उच्च शिक्षा के दायरे के बाहर रहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, ये किसी एक वर्ग में, एक जाति में, एक समूह में, एक एरिया में, एक धर्म में नहीं मिलेंगे। दे आर स्कैटर्ड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पीपल। नाउ लेट मी, अगर हमें विश्व गुरु बनना है, अगर हमें by 2047 we have to become a developed country, we need contribution of all these people in nation। ऐसा नहीं होगा कि कुछ ही लोग काम कर रहे हैं या समाज के किसी एक ही तबके के लोग काम कर रहे हैं और बाकी लोगों को मौका नहीं मिल रहा, then that will not be inclusive development also। दिव्यांग जी, हमारे पास डेवलपमेंट तो काफी सारी, हम कहते हैं कि अब हमारा देश दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है ना, 5वीं 4थी जो भी हो बन चुका है, हम कहते हैं, दैट्स ट्रू। बट इज दैट डेवलपमेंट इंक्लूसिव वन? बिल्कुल, इसका आंसर ना है। ये डेवलपमेंट इंक्लूसिव नहीं है। फिर मैं दूसरे वर्ड में कहूं, जिस देश में 80 करोड़ जनता गवर्नमेंट के दिए राशन पे अपना गुजारा करती है, तो दैट डेवलपमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दिव्यांग जी, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टेल यू? Yes, sir. Yes, sir. हम 5वीं इकोनॉमी तो बन गए दुनिया में, लेकिन ये ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। ये ग्रोथ इकोनॉमी के हमारे इंक्लूसिव नहीं है। अगर हम हमारे देश के 1% भी रिच पीपल अलग करते हैं इससे, तो हम मेरे ख्याल से 50वीं या 60वीं इकोनॉमी बन जाएगी। Right, हम sir. सीधा 5 से लेकर 50 तक आ जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा आपसे, जिस देश में 80 करोड़ लोग सरकार द्वारा दिए गए राशन पे या कुछ पैसे पे अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं, वो ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है, वो डेवलपमेंट इंक्लूसिव नहीं। यही मैं और एक बात जोड़ना चाहूंगा, हमारे गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सपोर्ट स्कीम तो है, लाइफ सपोर्ट स्कीम मैं कहना चाहूंगा, और टिपिकल हो जाता हूं। मतलब 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देने के बाद होता क्या है, वो सिर्फ जिंदा रह पा रहे हैं, उनको खाने को मिल रहा है। या फिर लाडली बहना के नाम पे हमने 1,500 रुपए दे दिया,
उससे उनकी लाइफ में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, वो सिर्फ जिंदा रहने में थोड़ी सी आसानी हो रही है। व्हाट माई मीन टू से, सर मैं कहना कुछ और चाहता हूँ, एग्जाम्पल मेरे अब थोड़े बाजू में रखिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वी वांट गवर्नमेंट टू ब्रिंग एम्पावरमेंट स्कीम्स, नॉट सपोर्ट स्कीम्स। हमें डिपेंडेंट बनाने वाली या आइडल बनाने वाली या सिर्फ हमें जिंदा रखने वाली स्कीम की हमें जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है उनको एम्पावर करने वाली स्कीम। अब देखो, मैं किसी गवर्नमेंट की मैं आलोचना नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हमारे पास बीपीएल क्या है, बीपीएल के क्राइटेरिया क्या है, अलग है। इसके घर में लाइट है, वो बीपीएल से बाहर आ गया। इसके पास नल का कनेक्शन है, वो बीपीएल से आके निकल गया। या फिर जिसका बच्चा स्कूल में जाता है वो निकल गया। इसके घर पे छत है, वो निकल गया। अरे भाई, अगर गवर्नमेंट घर बना के दे रही है, गवर्नमेंट टैप दे रही है, गवर्नमेंट मुफ्त में बिजली दे रही है, तो दे पीपल हैव नॉट बिकम एम्पावर्ड। आपने उनको बैसाखी दी है। मैं कहना ये चाह रहा था कि वी नीड एम्पावर, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल। एंड प्लीज रिमेंबर, एजुकेशन इज एम्पावरमेंट। शिक्षा हमें एम्पावर करती है सर। मैं अब ज्योतिबा फुले जी को और लोगों को यहाँ कोट नहीं करना चाहता, वी नो ऑल दिस थिंग्स, लेकिन दीज आर एम्पावरमेंट थिंग। आज हम में से जितने भी लोग, मान लीजिए कोई ओबीसी है, कोई एसटी है, कोई अदर कैटेगरी में है, लेकिन आज मान लीजिए कि किसी नौकरी में, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, तो वो शिक्षा के कारण। तो शिक्षा इज एम्पावरमेंट स्कीम, देयरफॉर वी नीड टू गिव एक्सेस टू ऑल। जितने भी डाइवर्स पीपल है ये, उनको हमें एक्सेस देना है। नाउ लेट मी पुट बिफोर यू द फैक्ट्स। बेसिक मैंने शुरुआत में कहा था, in the first place I will tell you what is higher education setup in India. एक बार उसको देख लेना। मैंने पहले लिया है टाइप ऑफ HEIS, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। फिर बात की है मैंने उनका नंबर क्या है, उनका परसेंटेज क्या है, और फिर बात की है मैंने उनमें एनरोलमेंट कितना है। सर, दिस फिगर्स आर नॉट माय ओन फिगर्स। शायद आप लोग जानते होंगे कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करता है एनुअल बेसिस पे, हम जिसको कहते हैं AISHE रिपोर्ट, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट। हमारे पास सबसे ताजा रिपोर्ट है 2021-22 का। उसके बाद 22-23 में नहीं आया, 23-24 में नहीं आया, 24-25 पे नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये डेटा है 21-22 का, और उस डेटा के हिसाब से हमारे पास 1168 यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी लाइक इंस्टीट्यूट्स were there. Universities in the proper name or university like institutes. Named university, private university, open university, alana, falana, dikhana, this. Then we have had 45,000 plus colleges. लगभग 45,473 हमारे पास कॉलेजेस, और हमारे पास 12,002 SAI है। SAI मतलब स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन। इसमें नर्सिंग कॉलेज आता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज आती है, या फिर आपका बीएड कॉलेज आता है, होटल मैनेजमेंट कॉलेज आता है, ये सारे SAI में है। एंड दिस नंबर आर हियर। तो मैं थोड़ा इसको आगे लेके जाता हूँ, और यहाँ पे देख लेना थोड़ा सा, वेयर इज द नंबर। हमारे पास कुल मिला के 4,33,00,000 स्टूडेंट एनरोल्ड है। 21-22 में हमारे देश की उच्च शिक्षा संस्थानों में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेर 4,33,00,000। देख लेना, 1,168 यूनिवर्सिटीज, 45,000 कॉलेजेस, 12,000 SAIS, लगभग 16 लाख टीचर, और हमारे बच्चे लगभग 4,33,00,000। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। दिस इज द बाइफर्केशन जो मैंने आपको बताया। द सेम थिंग, यूनिवर्सिटीज, colleges and SAIs.
SAI मतलब standalone institute. Then let me move onward. The thing I was telling you here, sir, there are 4 crore 33 lakh students. एक कोई है no one, no one, no one, no one. कहाँ गए सारे लोग? अगर आपको ब्रेक चाहिए तो ब्रेक भी दे देंगे, लेकिन सामने आ जाए. हेलो. यस. आप मुझे जो भी समझे, मुझे कोई ना कोई सामने चाहिए, कोई ना कोई. Whatever you want to say me, you may. Now see, as per the government data, we have had 4 crore 33 lakh students in India in that particular year. 21-22 में हमारे पास 4 करोड़, तो बाद में कॉल करता हूँ मैं, 4 करोड़ 33 लाख हमारे पास थे. अब ये तो टोटल नंबर, और हमारा GR उस साल का था 28.4. जैसे कि बेबी जी ने मुझे कहा कि लगभग आज चौथा दिन है, 4, 5, 6, 7, तो हमें GR क्या चीज होती है इसके बारे में आप आइडिया आ चुके. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. वो निकाला कैसे जाता है? एक अप्रोक्सीमेट किया जाता है कि हमारे देश में 18 to 23 के एज ग्रुप में कितना पॉपुलेशन. ये सिंपल फॉर्मूला कि हमारे देश में 18 से लेकर 23 एज ग्रुप में कितना पॉपुलेशन है, और उसमें से कितने बच्चे या बच्चियां, या लड़के या लड़कियां, या मैं कहूँगा युवा, उच्च शिक्षा में आ पाते हैं. एंड एज पर दैट डेटा आवर GER इज 28.4. इसका मतलब ये भी है, दीपेंद्र जी कहाँ गए? आपका कैमरे का बदल गया था पूरा. चलो कोई बात. हमारा GR 28.4 है. मतलब 18 से 23 के ग्रुप में अगर हमारे पास मान लीजिए कि 100 युवा है, तो उसमें से सिर्फ हम 28.4% बच्चों को उच्च शिक्षा में एक्सेस दे पाए हैं. इसका मतलब ये भी निकलता है कि 71.6% बच्चे हमारे आज भी एजुकेशन से बाहर. आज भी हमारे 71.6% युवा और यूथ आर आउटसाइड हायर एजुकेशन. जब कई और भी देते, मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा. हमारे देश का GR उच्च शिक्षा का है 28.4. इसका एक निकाला कैसे जाता है? मैंने आपसे कहा कि ये कैलकुलेट किया जाता है कि हमारे देश में 18 to 23 के ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन में से कितने युवा उच्च शिक्षा में एनरोल हो पाते हैं. दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. अगर हमारे पास 28.4 GR हमारा है, इसका दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि 100 में से सिर्फ 28.4 बच्चे उच्च शिक्षा में आ पाते हैं, और 71.6% बच्चे नहीं आ पाते. अब देवेंगे कि थोड़ा ये भी आप कैलकुलेट करना अगर संभव है तो. अगर 28.4% का नंबर 4 करोड़ 33 लाख है, तो उसका 100% कितना होगा? मेरे ख्याल से लगभग 13 लाख है ना. इसका 3 times मोर, इसका 3 times मोर होगा 13 करोड़. अब ये कैलकुलेट किया जाता है कि 13 करोड़ हमारी युवादी, हमारी आबादी 18 to 23 के ग्रुप में 13 करोड़, और उसमें से हम सिर्फ 4 करोड़ 33 स्टूडेंट को अंडर ला पाए हैं, बाकी के बाहर. अब ये क्यों बाहर है? द रीजन वी विल लुक इनटू आफ्टरवर्ड. अब हमें साथ मैंने शुरू में ये भी दिया था कि आवर SEDGs
सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, और ये बच्चे अलग अलग ग्रुप में, एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है, माइनॉरिटीज में, हर जगह है। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि हर एक तबके से कितने लोगों को हम उच्च शिक्षा में ला पाए हैं, कितने लोगों को हम इंक्लूड कर पाए हैं, और कितने लोग आज भी बाहर। तो मैं थोड़ी बात करता हूँ एससी के साथ। हमारे पास उस ईयर में एससी के 66.23 लाख स्टूडेंट्स हैं। हमारी जितनी भी पॉपुलेशन एससी के तहत आती है उसका जीआर है 25.9। इसका मतलब यहाँ 74.1% आर आउट से अभी भी बाहर है हमारे दायरे से। फिर बात करते हैं एसटी की, ओनली 27 लाख। अब देखो, आप विदर्भ में हो, हम जानते हैं कि विदर्भ इज अ ट्राइबल पॉपुलेटेड एरिया। थाने भी ट्राइबल पॉपुलेटेड है, रायगढ़ का भी कुछ पार्ट ट्राइबल पॉपुलेटेड है, छत्तीसगढ़ तो पूरा ट्राइबल पॉपुलेटेड स्टेट है, झारखंड भी ट्राइबल पॉपुलेटेड स्टेट है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से आज भी ट्राइबल पॉपुलेटेड है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारे देश में ट्राइबल पॉपुलेशन भी काफी बड़ी है, काफी है, लेकिन फिर भी हम ओनली 27.1 लाख बच्चों को उच्च शिक्षा में ला पाए। इसका मतलब यहाँ 78.9 ट्राइबल आर आउटसाइड है, वो आज भी मौके का इंतजार कर रहे हैं। फिर बात आती है ओबीसी। कितने ओबीसी हमारे पास? 1,63,00,000। नंबर इज हायर। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने यहाँ ये लिखा है कि जीआर इज नॉट अवेलेबल। मैंने एससी का जीआर बताया आपको, एसटी का जीआर बताया, लेकिन मेरे पास ओबीसी का जीआर नहीं है। दिव्यांग, इसका कारण बहुत आसान है। इसका कारण ये है कि हमारे देश में कास्ट सेंसस अब तक नहीं हुआ। कास्ट वाइज सेंसिटिव, एक बात समझ लेना दिव्यांग, हमारे पास कुछ कास्ट को उठाकर कैटेगरीज में डाला है। ये कास्ट एससी में काउंट करेंगे, ये कास्ट हम एसटी में काउंट करेंगे, ये कास्ट हम ओबीसी में काउंट करेंगे। हमारे जब पिछला सेंसस हुआ 2011 में, उस सेंसस में एससी का और एसटी का कैलकुलेशन हुआ है, उसकी काउंटिंग हुई है, लेकिन हमारे अब तक के किसी भी सेंसस में ओबीसी की काउंटिंग नहीं हुई। इसलिए हमारे देश में अभी आज भी किसी को भी एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि हमारे पास ओबीसी में कितना पॉपुलेशन। क्यों नहीं है? हमने ऐसी उसकी गिनती ही नहीं की है। इसलिए आजकल हम पॉलिटिक्स में देखते हैं कि कास्ट वाइज सेंसस होना चाहिए, ताकि हमें पता चलेगा कि ओबीसी कितने हैं, एसटी कितने हैं, एससी कितने हैं, या फिर माइनॉरिटीज कितने हैं। सब नीचे का मैं पॉइंट दिखाता हूं आपको। 37.58 lakhs are minority and other groups. Only 58 lakh, 38.58 lakh. ये पूरे माइनॉरिटीज है। इसमें क्या क्या है? माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम आ गए, क्रिश्चियन आ गए, पारसी आ गए, जैन आ गए, बुद्धिस्ट आ गए, इवन सिख भी आ गए, और साथ साथ पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस। इसका भी हमारे पास जीआर नहीं है। दिव्यांग जी, हम राजनीति में बहुत कई बार सुनते हैं, या कई बार हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चलती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस साल 50 साल के बाद हमारे पास मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी बड़ी होगी कि उनका प्राइम मिनिस्टर। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई उसका फार्मूला क्या है, कैलकुलेट करेंगे। पिछले 75 सालों में हमें वो थोड़ा भी मतलब आउट नंबर नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, तो आने वाले समय में कैसे बढ़े? आजकल तो शिक्षा का प्रमाण बढ़ा है, फैमिली प्लानिंग का प्रमाण बढ़ा है, ज्यादा बच्चे कोई भी अफोर्ड नहीं करता आजकल। दिस इज ह्यूमर ओनली, सॉरी, दिस इज ह्यूमर ओनली। ये सिर्फ एक अफवाह है, गलत फहमी है।
और गलतफहमी का पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे सामने, हमारे गवर्नमेंट के पास यही फिगर नहीं है कि आज हमारे देश में कितने परसेंट मुसलमान, नहीं, ऑन रिकॉर्ड हमारे पास फिगर नहीं है कि हमारे देश में कितने, एक गेस किया जाता है कि इतने हो गए, कहा जाता है 15 to 18% है, 15 to 18% है, गेस है। मैं कहना ये चाह रहा था कि इतने, मान लीजिए कि 18%, मैं थोड़ा सा आगे लेता हूँ, नॉर्थ ईस्ट से 12 लाख स्टूडेंट, मैं थोड़ा इसको आगे लेके जाता हूँ, ये देख लेना। अगर हम थोड़ा उसको माइनॉरिटीज का भी थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन करते हैं, प्लीज रिमेंबर ओनली 21 लाख, मैं इसको थोड़ा और ये करता हूँ, ओनली 21.08 लाख आर मुस्लिम इन हायर एजुकेशन। मोरे जी थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं हम, हमारे आबादी 140 करोड़ है। मान लिया, चलो मान लिया कि वो 20% है मुसलमान, मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो कितना पॉपुलेशन हो गया फिर उसका? 28 करोड़ पॉपुलेशन रफली। अब देखना 28 करोड़ में से सिर्फ 21 लाख बच्चे उच्च शिक्षा में, सिर्फ 21 लाख। अब 28 करोड़ का कितना परसेंटेज निकलता है देख लो, पॉइंट में जाएगा सर, 10% भी नहीं होगा, 28 लाख भी नहीं हो रहा है, 8% होगा मुश्किल से, मैं 8 या 7% हो रहा है। कितना हो रहा है ये? 7% हो रहा है, मैक्सिमम 7%। आप देख लो, मतलब हमारे पास इतने बड़े युवा है मुस्लिम आबादी के जो स्किल्ड होते हैं किसी न किसी काम में, लेकिन उच्च शिक्षा में नहीं है, उनका एक्सपर्टाइज हम इस्तेमाल नहीं करते। एससी की वही बात है, 71% बाहर है, तो एसटी के, एससी के लगभग 74% बाहर है। आप देख लेना अदर माइनॉरिटी कितना है, 9.05 लाख। इसमें सारे आ गए सर, इसमें सारे आ गए, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, सारे आ गए। अरे दोनों मिला के आ जाता है 30 लाख। अब ये भी देख लेना, हमारे पास ओनली 88,000 आर पीडब्ल्यूडी इन हायर एजुकेशन, सिर्फ 28,000, करेक्ट 88,000। इतना बड़ा देश, और सर शायद आपको पता नहीं होगा कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, जिसके बारे में हमें कोई भी पता नहीं। डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज आर देयर। हमारी डिसेबिलिटी की मोटी मोटी व्याख्या क्या है? जिसको दिखता नहीं है, जिसको सुनाई नहीं देता, जिसका हाथ पैर कुछ ना कुछ चीजें ठीक नहीं है, हम उसको मानते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रकार, इतने सारे प्रकार हैं कि हम मोटे मोटे डिसेबिलिटी की भी काउंटिंग नहीं कर पाते। जब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हमारे देश में ये काउंटिंग नहीं है कितने लोग हमारे पास डिसेबल्ड है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और मैं बता रहा था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस आया है हाल ही में, उसका फिगर ज्यादा है। वो उसको लेकर तो बहुत सारी बातें हो सकती है, क्योंकि 7 लाख के नीचे वाले सारे ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं। जिसका इनकम 7 लाख हो सालाना, उसका मंथली इनकम कम से कम 60,000 होना चाहिए। और 60,000 वाला गरीब नहीं कहा जा सकता। जिसकी महीने की इनकम 60,000 है उसको गरीब नहीं मानते, लेकिन गवर्नमेंट उसको ईडब्ल्यूएस कहती है। आज अब दिक्कत है। और जैसे कि मैंने कहा लास्ट सेक्शन ईयर कि देर आर ओनली 46,878 फॉरेन स्टूडेंट्स इन, इसको भी याद रखना थोड़ा सा। ये 12 लाख स्टूडेंट हमारे नॉर्थ ईस्ट से, सिर्फ 12 लाख। नॉर्थ ईस्ट में लगभग 7-8 बड़े बड़े 7-8 स्टेट्स हैं, उसमें सिर्फ 12 लाख। थोड़ा में आ गया, क्लियर नाउ? मैं थोड़ा ये भी जाते जाते ये भी आपको बता दें, हमने स्टूडेंट एनरोलमेंट में डाइवर्सिटी क्या देख ली है। अब हम देखते हैं कि हमारे टीचिंग पोजीशन में क्या हालत है। जैसे कि मैंने कहा था आपसे, हमारे पास लगभग 16 लाख टीचर थे, 15,97,000
668 ये नंबर उस साल का है। उसमें देखना सर केसेस कितने हैं, 1,48,000। एसटीज कितने हैं, ओनली 41,000। ओबीसी कितने हैं, 5,16,000, 5,16,000। पीडब्ल्यूडी कितने हैं, देख लेना सर, ओनली ओनली 10,000। मुस्लिम कितने हैं, ओनली 89,000। मैं ओनली जानबूझ के कह रहा हूं, as compared to the population of Muslims, minorities, SCs, STs, their representation in higher education, teaching position is very less. अगर आप ये सारे फिगर अगर आप काउंट करते हैं इसमें सारे मिला के, इसमें से तो आप पाओगे कि more than 50% employees belong to general category। ये कितने हैं, 1.5 लाख। ये कितने हैं, 5,16,000। 5,16,000 मतलब ये दोनों मिला के हो गए 7 लाख भी नहीं हुए ये, ठीक है। और 41, 79, 41 मतलब मैक्सिमम पीपल बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है सर, ये रिजर्वेशन उच्च शिक्षा में उतनी मात्रा में उतनी स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो नहीं चाहिए। मैं थोड़ी बात यही करता हूँ, थोड़ा सा नॉन टीचिंग मिशन के भी हालत देख लो क्या है। दिव्यांग जी ये फिगर मैंने गवर्नमेंट के डेटा से निकाले हैं, ये मेरे अपने फिगर नहीं है, वो डिफरेंट पेजेस पे स्कैटर्ड थे। मैंने उसको एक जगह कंपाइल किया, एक पेज। नॉन टीचिंग कितने हैं, 12 लाख। ऐसी कितने हैं, 1,81,000। एसटी 56,000। देखो नॉन टीचिंग में एसटी ज्यादा है, यहाँ कितने थे, 41 थे। टीचिंग में 41 थे, नॉन टीचिंग में 56 है, क्योंकि क्या है, ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो प्यून क्लर्क लेवल पे रहते हैं, ज्यादा ऊपर नहीं आ पाते, बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्सेस टू हायर एजुकेशन। फिर ओबीसी, ये फिगर आपको बड़ा लगता है, 3,45,000, कहा जाता है कि देश में लगभग 60% और ओबीसी, ये कहा जाता है, मैं दोबारा कह रहा हूं, कहा जाता है, नॉट एग्जैक्टली नोन, नॉट एग्जैक्टली नोन, क्योंकि हमारे पास फिगर नहीं कि ओबीसी कितने हैं हमारे देश में। कहा जाता है कि 50 to 60% और ओबीसी, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, 345। पीडब्ल्यूडी तो देख लो, इट इज शॉकिंग, ओनली 5,276। मुस्लिम ओनली 41,000, अदर माइनॉरिटी 36,000, एंड ईडब्ल्यूएस ये ज्यादा है। मैं कहना ये चाह रहा था ये सारे फिगर के साथ कि हमारे आबादी के जो हमारे एसईडीजीज हैं, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, वो अलग अलग कैटेगरीज में, सोशल कैटेगरीज में, एससीज में है, एसटीज में, ओबीसी में है, माइनॉरिटीज में है, पीडब्ल्यूडीज में है, ये सारे स्कैटर्ड हो रहे हैं। और ये फिगर हमारे पास ये बताते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा आज भी उच्च शिक्षा के दायरे में नहीं आ पाया है। इसका मतलब हम कलेक्टिवली, मैं कह रहा हूं, हम उनको एक्सेस नहीं दे पाए, हम उनको इंक्लूड नहीं कर पाए उच्च शिक्षा। रीजन आर डिफरेंट, अब आपको थोड़ी देर रीजन की भी बात करूंगा। तो व्हाट आर द रीजन ऑफ नॉन इंक्लूजन? इतनी डाइवर्सिफाइड हमारे पॉपुलेशन को क्यों नहीं दे पाते? ये रीजन जो भी है सर, दे डोंट नीड एनी रॉकेट साइंस, ये द सिंपल रीजन नोन टू एवरीबॉडी। पहला क्या है, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। हमारे पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा आज भी सोचता है भाई आपने 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, बस हो गया, बस हो, कोई जरूरत नहीं। क्यों? बिकॉज दे डोंट नो व्हाट अपॉर्चुनिटीज मे बी देयर आफ्टर हायर एजुकेशन। बच्चे क्या बोलते हैं, मैं 10वीं पास कर लिया, बस हो गया। लड़कियों के बारे में देखो, लड़कियों के बारे में देखो, बातचीत से बात करो, बातचीत से बात करो, क्या कहते हैं वो, ये खराब हुआ, ये खराब हुआ, क्या कहते हैं, बस 10वीं 12वीं कर ली, बस हो गया। लड़कियों के बारे में तो देखो,
जब तक गांव में स्कूल की व्यवस्था है तब तक ही लड़कियां पढ़ती है बहुत सारी। वैसे ही वो फिजिकली मैच्योर हो जाती है, बहुत सारे पेरेंट्स दूसरे शहर में नहीं भेजते। Why? Many of them don't know what opportunities may be there. Second thing, cost of pursuing higher education and financial constraints. ये भी बहुत बड़ा हिस्सा है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग हो, आपको अच्छी तरह पता है कि फीस क्या है इंजीनियरिंग कॉलेज की। फॉरगेट अबाउट आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज है, वहां तो अगर एडेड है तो बहुत कम फीस है। मैं आपको बता दूं सर, अनएडेड कॉलेज में भी अगर आपको बीएससी को एडमिशन लेना है तो आपको लगभग 4,000 रुपये लगेगा। 4,000 अगर वो किसी कैटेगरी में आता है, और एडेड कॉलेज है तो ठीक है, फिर 400-500 रुपये हो जाए। एंड डे बाय डे द कॉस्ट इज गोइंग। एट द सेम टाइम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, देखो महंगाई बढ़ चुकी है लेकिन उस मात्रा में इनकम लोगों का नहीं बढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं, कोरोना के बाद करोड़ों लोग हमारे बेकार थे। जीएसटी ने बहुत सारे लोगों के कमर तोड़ दी। एआई और कुछ चीजें बिगाड़ने जा रही। तो दिस इज अगेन वन रीजन। थर्ड थिंग, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस एंड लैंग्वेज बैरियर। इसमें मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस एंड लैंग्वेज बैरियर, उसी रिपोर्ट में सर, एआईसीसी रिपोर्ट में ये दिया है कि हमारे देश में 1 लाख एलिजिबल पॉपुलेशन के लिए 29 कॉलेजेस है। एलिजिबल पॉपुलेशन मतलब 18 to 23। हमारे देश में ऐसे 1 लाख पॉपुलेशन के लिए 28 कॉलेजेस है। बट दिस नंबर डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। महाराष्ट्र में 34 कॉलेजेस है, मतलब महाराष्ट्र की स्थिति कंपैरेटिवली ठीक है, कंपैरेटिवली ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप साउथ में जाओगे, मैं साउथ में जा रहा हूं लेकिन आप अपना कैमरा बंद कर रहे हैं। कोई आ जाए। हेलो। Yes, sir. अरे सामने तो कोई आए। Sir, I was facing some network issues, hence I switched off the camera. कैमरा तो ऑन कर सकते हैं अगर यू आर नॉट समवेयर बिजी दैट मच। थैंक यू फॉर थैंक यू। आई वाज टेलिंग दैट कि हमारे देश में नेशनल लेवल पे 1 लाख एलिजिबल पॉपुलेशन के लिए 29 कॉलेजेस आर देयर, 31 कॉलेजेस आर देयर, 31 को नेशनल लेवल पे। महाराष्ट्र में 34 है, मतलब एवरेज से थोड़ा ठीक है। ये तो है। हाँ, ये तरीका है अपने बारे में। देखो देखो 31 कॉलेजेस, महाराष्ट्र में 34 है। लेकिन मैडम आप जैसे जैसे साउथ में जाओगे वैसे वैसे हालात अच्छे हैं। कहाँ कहाँ 40, कहाँ का 44, कहाँ का 48 कॉलेजेस फॉर 1 लाख एलिजिबल पीपल्स। लेकिन आप जैसे जैसे नॉर्थ में आ जाओगे, सेंट्रल इंडिया में आ जाओगी, हालात थोड़े बिगड़ते। बिहार में ओनली 10 कॉलेजेस आर देयर फॉर 1 लाख एलिजिबल पॉपुलेशन। इसका मतलब जो भी कॉलेजेस है या तो शहर में होंगे या दूर दूर सिचुएटेड। जहां लोगों का इनकम कम हो, जहां लोगों के पास कमाई के साधन न हो, ऐसे हालात में कोई भी बच्चा या बच्ची अपने जेब से ट्रैवल करके सिटी में कॉलेज को नहीं जाता। हमारे देश में अभी भी पूरे कॉलेजेस में, पूरे यूनिवर्सिटीज में रेसिडेंशियल व्यवस्था नहीं है। आप भी यूनिवर्सिटी, आप भी एक कॉलेज चलाती हो, सारे के सारे लोगों को आप अकोमोडेट नहीं कर पाओगे अगर आपके पास हॉस्टल है भी तो।
हम ज्यादा से ज्यादा उसको ट्यूशन फीस में मतलब कंसेशन देगी, गवर्नमेंट भरेगी। हॉस्टल फीस कितना मिलता है बच्चों को? बहुत कम मिलता है। अगर आपके पास हॉस्टल नहीं, अगर बच्चों को बाहर रुक करके रहना है, नॉट पॉसिबल। So geographical it does matter. Another thing, language barrier. The earlier session I was listening to, it was in English. Dr. Ann was dealing with in English. मैम, हमारे देश में लोग आज भी हिंदी ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो हाउ विल दे फाइंड देमसेल्फ कंफर्टेबल इन इंग्लिश? नहीं करते। अगर पुणे का कोई व्यक्ति आकर हमारे आपके वर्धा में या फिर गढ़चिरौली में या फिर चंद्रपुर के किसी टाउन में तहसील में जाकर पुणे का आदमी कोई आकर मराठी में पढ़ाने लगेगा, तो हमारे बच्चे नहीं फॉलो कर पाएंगे मराठी ही। वी डोंट फॉलो द स्टैंडर्ड टाइप ऑफ मराठी। पुणे के सदाशिवपेट एरिया में जो पुणे का रहने वाला एजुकेटेड पर्सन है, वो जो मराठी बोलता है उसको हम स्टैंडर्ड मराठी बोलते हैं। आई रिपीट, पुणे के सदाशिवपेट में रहने वाला नेटिव पुणेकर जो एजुकेटेड है और मराठी की जो डायलेक्ट, जो वैरायटी वो इस्तेमाल करता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मराठी। एंड मुझे लगता है कि गढ़चिरौली का या मेड़ा का या कहीं और का बच्चा वो मराठी भी नहीं फॉलो करता। और हमारे यहाँ उच्च शिक्षा का माध्यम इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे पास आने वाले बच्चे 12वीं पास होके आते हैं, वहाँ इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट है। इंग्लिश के चलते बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं 12वीं में। जितने फेल हो जाते हैं उसमें से 20% भी बच्चे बाद में ट्राई करके आगे नहीं बढ़ते, छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। मतलब यहाँ इंग्लिश हैज बिकम अ लैंग्वेज बैरियर, है ना। हमारे सिटी का भी रिजल्ट 100% नहीं होता है। यू कैन इमेजिन हाउ द ट्राइबल स्टूडेंट विल फॉलो इंग्लिश एंड दे विल पास इन इंग्लिश। जैसे फेल हो जाते हैं वो लौट कर वापस नहीं आते, जंगल में अपने पाड़े में रहते हैं एंड दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम इंग्लिश। माय पॉइंट ऑफ ओनली दिस मीन दैट geographical distance and language is also a barrier for access to them. फिर बात आती है ये जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, पोर एम्प्लॉयबिलिटी। मैडम, 4,33,00,000 बच्चों में से 80% बच्चे हमारे यूजी में ही, बीकॉम, बीएससी, बी, समथिंग लाइक दैट। उसमें से 40% सिर्फ आर्ट, कॉमर्स, साइंस में। These are the government figures. उसको खोल के वहां का निकाल के हम लगा देते हैं। मतलब 80% में से 40% आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में ही। और हम जानते हैं कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के कोर्सेज हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते। यू आर वर्किंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज, इट इज अ प्रोफेशनल कॉलेज, यू नो बेटर देन मी व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट रेट और प्लेसमेंट रेट इन योर इंस्टीट्यूट। आप उसको ओपन भी ना करें, मैं भी नहीं पूछूंगा। इफ दीज आर द थिंग्स विद प्रोफेशनल कोर्सेज, आईआईटी के बच्चों का भी पैकेज कम हो चुका है, आईआईएम के बच्चों का भी पैकेज कम हो चुका है। अगर ये हालात है तो व्हाई शुड दे लर्न? मैडम, 30 years ago और 40 years ago और 50 years ago जो पढ़ता था उसको नौकरी कोई ना कोई मिलती थी। पुलिस में जाने के लिए, मिलिट्री में जाने के लिए तो आपको 10th की भी जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ पढ़ना लिखना संभव था, मतलब अवश्य। मैंने तो उस प्रकार के भी टीचर देखे हैं, टीचर जो 7वीं 8वीं पास थे, उनको पहले जॉब दे दिया और बाद में फिर उनका इन सर्विस ट्रेनिंग करवाएंगे। दो डेज आर गॉन नाउ। आज हम देखते हैं कि प्यून के जॉब के लिए भी मास्टर्स वाले बच्चे या फिर पीजी वाले बच्चे या फिर मैं कहता हूँ पीएचडी वाले बच्चे अप्लाई करते। इसका मतलब दूसरा ये निकलता है कि आवर एजुकेशन इज अनेबल टू जनरेट एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये हमारे कोर्सेज की एम्प्लॉयबिलिटी कम होना
ये भी उच्च शिक्षा में एक्सेस कम होने का कारण। योर इंस्टीट्यूट इज प्राइवेट फूड, मुझे पूरी गारंटी है कि आप लोगों को भी एडमिशन के लिए कई बार घूमना पड़ता है। आप जहाँ जहाँ 12 सेंटर है वहां जाओ, बच्चों से मिलो, पेरेंट्स से जाके मिलो। एक बार जाना, देहात में जाना, आपके पेरेंट को पूछना, देखा सकते पेरेंट को पूछना कि अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हो, क्या बोलेंगे, पढ़ के भी क्या करेंगे, कार्डों पे मिलवाएंगे। दिस इज आगे नहीं होगा। देन एडमिशन प्रोसेस, ये डिफिकल्ट हो चुका है मैडम आज, ये कॉम्प्लेक्स हो चुका है, कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। जब मैंने 10th पास किया या 12th पास किया, बहुत आसान था। ओरिजिनल, मेरे को ओरिजिनल टिक लेके मैं कॉलेज में गया, एडमिशन फॉर्म ले लिया, फॉर्म भर लिया, मैं बोलना बंद में खोल दूं। नीचे खींच लो, नीचे हेलो, एडमिशन फॉर्म ले लिया, फॉर्म भर दिया, एडमिशन कमेटी का साइन ले लिया, फीस भर दिया, एडमिशन इज ओवर। आज हमें एंट्रेंस देना है, उसके मेरिट लिस्ट लगनी है, कैटेगरी वाइज लगनी है, ऑनलाइन अलॉटमेंट है, कॉलेज अलॉट करना है, फिर जाना है, फिर काउंसलिंग होनी है, सब कुछ ऑनलाइन करना है। आज भी हम में से सारे लोग ये नहीं कर पाते। हमारे पास मोबाइल लिटरेसी तो बढ़ चुकी है मैडम, लेकिन डिजिटल लिटरेसी नहीं बढ़ी। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर कोई बच्चा या कोई लड़की व्हाट्सएप चला पाती है या फेसबुक चला पाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी चीजें वहां कर सकती। और ये आजकल एडमिशन की सारी प्रोसेस ऑनलाइन है। बच्चों के पास व्हाट्सएप का अकाउंट तो है, फेसबुक का अकाउंट तो है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसका जीमेल का अकाउंट भी है। आपके सारे के सारे बच्चे आपका जीमेल अकाउंट नहीं बता पाएंगे, उसका ईमेल आईडी नहीं बता पाएंगे। मोबाइल तो है उनके पास, दे यूज फेसबुक एंड व्हाट्सएप। इन दोनों के लिए आपका ईमेल आईडी होना जरूरी है, बट दे डोंट। व्हाट माय पॉइंट इज दैट, मैं कहना ये चाह रहा था यार, हमारे पास डिजिटल लिटरेसी आज भी कम है। मोबाइल की भी कमी है। मैं ये भी कहना चाहूँ, हो सकता है कि प्रतिका मैडम के पास दो दो मोबाइल हो, एक पॉकेट में ये, दूसरे पॉकेट में दूसरा है, हो सकता है। या फिर एक एक के घर में दो दो फोर व्हीलर हो सकती है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे फैमिली में एक ही स्मार्टफोन होता है। वन, सिर्फ स्मार्टफोन होना पर्याप्त नहीं है, उसको चार्ज करने के लिए लाइट भी लगती है, वो भी हमारे पास देहात में होती है। मोबाइल में डिजिटल एक्टिविटी चलाने के लिए हमें डेटा भी होना चाहिए, वो हमें मुफ्त नहीं मिलता, हमें खरीदना पड़ता है। हमें राशन तो मुफ्त मिलता है, लेकिन डाटा हमें खरीदना पड़ता है। मैं कहना ही चाह रहा था, ये सारी ऑनलाइन चीजें होने के कारण बहुत सारे बच्चे इससे छूट जाते हैं। और लास्ट में वांट ऑफ अप्रोप्रिएट सोशल स्टूडेंट सपोर्ट मैकेनिज्म, ये भी कारण। बच्चों की काउंसलिंग कॉलेज में आने के बाद, उनके पेरेंट आने के बाद ठीक से नहीं होती। आपका प्रोफेशनल कॉलेज है, आपका प्राइवेट कॉलेज है, यू मस्ट बी लुकिंग आफ्टर द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वेरी वेल। बट इन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस द टीचर डोंट केयर, वो कोई जवाब ठीक से नहीं देता। ये भी रीजन है, तो दीज आर द रीजन। नाउ लेट मी कम टू द सेकंड पार्ट। मेरे पास टाइम कितना है, मेरे कैसे 15 मिनट है। अब एनईपी क्या है? सी, आई हैव कवर्ड टू थिंग नाउ। What is the status of diversified groups in our education? Second thing, what are the reasons of their non-provision? Now I will be talking here about what NEP says or what measures NEP provides. NEP provides or NEP talks about to include or to give access to the students. सबसे पहले ये पॉलिसी कहती है ईयरमार्क सुटेबल फंड फॉर एजुकेशन ऑफ एसडीजीज। हम क्या करते हैं, शिक्षा के लिए हमने इतना बजट किया, फाइन, उसमें से एसडीजीज के लिए कितना बजट ईयरमार्क रिजर्व,
नहीं। मैं थोड़ा सा, मैं चाहते हुए थोड़ी सी पॉलिटिकल बात करना चाहूंगा, थोड़ी सी। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि जो देश के टॉप ऑफिसर है उसमें देख लो कितने माइनॉरिटीज है, कितने ओबीसीज है, कितने एसटीज है, कितने एससीज है। देयर इज अ पॉइंट, इट मैटर्स हु मेक्स द पॉलिसी। पॉलिसी मेकिंग में वो तबके के लोग नहीं तो पॉलिसी ठीक से नहीं बनेगी। इसलिए आपको याद होगा हिमानी जी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि शासन करती जमात, मतलब सत्ता में जाओ, पॉलिसी मेकर बनो तभी आपकी बात बनेगी। ओनली दिस मीन्स आई वांट टू से दैट दिस पॉलिसी सेज कि आपको फाइनेंशियल प्रोविजन बनाने पड़ेंगे ऐसे डिजीज के लिए, उनके लिए अलग से फंड रखने। सेकंड थिंग, डेवलपिंग एसईजेड फॉर मोर यूनिवर्सिटीज एंड मोर कॉलेज। मैंने आपको एग्जांपल दिया, बिहार में 1 लाख पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 10 कॉलेज, महाराष्ट्र में 34 है। महाराष्ट्र की स्थिति मैडम एज कंपेयर टू साउथ स्टेट्स बैड। हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं बट नॉट। व्हेन यू कंपेयर तमिलनाडु विद महाराष्ट्र, कर्नाटक विद महाराष्ट्र, यू विल फाइंड दैट यू लैग बिहाइंड। इसका मतलब ये पॉलिसी, जैसे कि बिहार की मैंने बात की, ओनली 10 कॉलेजेस आते हैं, इट मीन पॉपुलेशन इज हाई देयर इन बिहार। बिहार में भी थर्ड लार्जेस्ट state in the country as by the in terms of population. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पर बिहार, देन मध्य प्रदेश। लेकिन कॉलेजेस कम है, इसका मतलब कॉलेजेस की कमी है। तो ये पॉलिसी कहते हैं कि अब हमें स्पेशल एजुकेशनल जोन बनाने पड़ेगी, SEZ। हम उसके तहत कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें ज्यादा कॉलेज बनाएंगे, नए निस्बत। देन नो लैंग्वेज बैरियर, बच्चे फेल न हो। लैंग्वेज एक सिर्फ मोड, ये मात्र टूल है कम्युनिकेशन का, मात्र माध्यम है कम्युनिकेशन का, वो हमारे लिए रुकावट ना। इंग्लिश को जो हमारे देश में अनड्यू इंपॉर्टेंस है, अनड्यू। मेरे यूजी, मेरा मास्टर, मेरा पीएचडी सब इंग्लिश में। लगभग लगभग मैंने 23 साल, almost 23 years, I earned my bread and butter with English। मेरी रोजी रोटी इंग्लिश से चली है लगभग 23 साल। फिर भी मैं कहता हूं इन इंडिया undue importance is given to English. English is becoming or has become a hindrance, an obstacle in case of many people. ये पॉलिसी इसलिए बात करती है कि अब हम उच्च शिक्षा भी मदर टंग में देने का प्रयास करेंगे, इंडियन लैंग्वेज में। देन सपोर्ट सर्विसेज, जैसे कि मैंने बात की कि हमारे पास सपोर्ट सर्विसेज थे, तो एंड दो शुड बी मेड स्ट्रॉन्गर। मैं आगे की बात करता हूँ। अब ये तो होगी गवर्नमेंट की, अब हमारे लिए क्या है? ये पॉलिसी कहती है कि इंस्टीट्यूट ने क्या करना है, एज एन इंडिविजुअल कॉलेज, एज एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट, एज एन इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी, आपको क्या करना है, क्या कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, मेक एडमिशन प्रोसेस इजी एंड इजी। सेकंड थिंग, मेंटरिंग प्रोग्राम को स्ट्रेंथन कीजिए, काउंसलिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम, जिसके तहत बच्चों को हम इमोशनल सपोर्ट दे सके, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके, एकेडमिक सपोर्ट दे सके। आई नहीं, बहुत सारे बच्चे, आप तो प्रोफेशनल कॉलेज में, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी पार्टनर टू शेयर। बात करने से बात होगी ना, बात नहीं करते। देन ब्रिज कोर्सेज फॉर स्टूडेंट ऑफ एससीडीज, ये जरूरी है। ब्रिज कोर्सेज, आप आपके यवतमाल सिटी के बच्चे की कंपैरिजन, तुलना आप धारवा से आए बच्चे से नहीं कर सकते, या मेडशी से जो बच्चा आपके पास आता है उसके साथ नहीं कर सकते। मतलब रूरल,
आप यवतमाल में है ना? यवतमाल अर्बन का बच्चा और यवतमाल के किसी तहसील के या छोटे खेड़े का बच्चा, उन दोनों का आप एक साथ कंपेयर नहीं कर। The boy coming from rural area is some way behind. उसको उसके बराबर लाने के लिए ब्रिज कोर्स बात आप करते हैं। Then more degrees in Indian language, that is true. हमें जेंडर आइडेंटिटी इशू को लेकर भी सेंसिटाइज होना पड़ेगा और नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड हैरेसमेंट के रूप को भी लेकर बात करनी। Then only we can develop this. अब थोड़ी सी बात करते हैं अंत में। लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू से हियर, मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे, आपके सामने मैंने एनईपी क्या मेजर्स लेने की बात करती है ये भी बात हमने, बट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम चैलेंजेस। अगर हमें डाइवर्सिटी का इंटेलिजेंस बढ़ाना है, उसके रास्ते में ये रोड है। द फर्स्ट एंड यूनिवर्सल इज इश्यू ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी इन द हायर एजुकेशन प्रोग्राम। नौकरी की बात ना करो, ठीक है, हम मान लेंगे। किसी ने कहा था कि ऑफिस के नीचे पकोड़े तलने वाला भी वो भी हम रोजगार कहेंगे या नौकरी कहेंगे, मान ली। डज आवर एजुकेशन ऑफर इवन दैट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट? प्राइवेट तो जॉब तो मिलता होगा, आप भी रिकॉर्ड रखती होगी, आपके पास से जितने बच्चे पास आउट जाते हैं उसमें से कितने बच्चों को प्राइवेट ही से कितना जॉब मिलता है? डू दे अर्न इनफ टू लिव देयर लाइफ कंफर्टेबली? मतलब, and remember, I'm citing example of your engineering college, and I know there are some issues. Then issues are more with traditional courses like arts, commerce, science colleges. तो जब तक हम इन कोर्सेज को, जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज, उनको हम कम से कम एम्प्लॉयबल नहीं बनाते, कुछ तो उसको आना चाहिए। इसलिए इस पॉलिसी ने कहा था कि ईच स्टूडेंट वन स्कीम। इस पॉलिसी ने टारगेट रखा था, मैं कहूंगा इस पॉलिसी ने 2020 में यह टारगेट रखा था कि 2025 तक उच्च शिक्षा के 50% बच्चों को हम कम से कम एक स्किल एजुकेशन देंगे। एक बार रिपीट करता हूं, 2020 में जब ये पॉलिसी आई तब उस पॉलिसी में ये टारगेट रखा था कि 2025 तक, जो आज आ चुका है, 25 तक उच्च शिक्षा के कम से कम 50% बच्चों को कम से कम एक स्किल में हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। कर पाए हम? आपको ज्यादा पता होगा मैडम, हमारे 4 करोड़ से कुछ लाख बच्चों में थे सिर्फ 5% बच्चे वोकेशनल एजुकेशन पाते हैं, ओनली 5%। इतने इंजीनियरिंग कॉलेज होने के बावजूद भी, इतने टेक्निकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई कॉलेज होने के बावजूद ओनली 5% आते हैं। इट मीन्स वी हैव टू add more and more vocational courses in our curriculum. Then financial concerns, madam, without money nothing is possible. भूखे पेट कोई भी लश्कर नहीं लड़ सकता, भूखे पेट कोई भी नहीं लड़। हमारे पास फाइनेंस की कमी है। 1966 में डिसाइड किया था कि हमारे जीडीपी का 6% एजुकेशन को मिलनी चाहिए। कब कहा गया था? 1966 में। 2017-18 का फिगर है, हम 4.45 तक ही जा चुके हैं 60 सालों में। And today the condition is that every year government is reducing its budget on education, reducing, not increasing, decreasing. गवर्नमेंट चाहती है कि अब इसमें इसका बहुत सारा लोड प्राइवेट वाले भी उठाए। गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो कॉर्पोरेट हाउसेस है या बिजनेस हाउसेस है वो अपना यूनिवर्सिटी बनाए, वो अपने कॉलेजेस बनाए। इसलिए रिलायंस वालों ने जियो यूनिवर्सिटी लॉन्च किया था, आपको याद होगा।
मतलब पैसे की कमी। आज भी हमारे देश में लगभग 40% सीट्स ऑफ द टीचर्स आर वैकेंट, 40% एट द नेशनल लेवल, द नंबर में भी मोर और लेस। सबसे बड़ी बात इंक्लूजन के लिए ये है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप। हमें इंक्लूजन एससी को देना है, एसटी को देना है, माइनॉरिटी को देना है, ओबीसी को देना है। हमारे पास एससी एसटी का तो डेटा है मैडम, लेकिन ओबीसी कितने हैं पता नहीं। ओबीसी सबसे बड़ा लार्ज पॉपुलेशन है। नेक्स्ट ओबीसी हमारे पास माइनॉरिटीज है, वो कितने ये भी पता नहीं। मतलब सबसे बड़ा इंक्लूजन हमें उनका करना है, लेकिन हमारे पास यही फिगर नहीं कि कितने हैं। मैडम मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, मान लीजिए, आई एम नॉट आईटी पर्सन और ईडी पर्सन, मैं आईटी से भी नहीं हूँ और ईडी से भी नहीं हूँ। मान लीजिए कि आपका पास पैसा है और आप घर में कोई प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, आपको मेन्यू फाइनल करना है, लेकिन जब तक आपको ये पता ना हो कि कितने लोग आपके पास आने वाले खाने के लिए, तो प्लानिंग कैनॉट बी। इन द सेम वे, अनलेस वी नो what is the population size of OBCs, what is the population size of minorities, what is the population size of PWDs, you can't make any provisions for them. तो ये बहुत जरूरी, सबसे जरूरी मेरे लिए ये है। Therefore मेरे ख्याल से हमारे गवर्नमेंट में लास्ट वाइज सेंसस क्यों यस का है। अब लास्ट पॉइंट हियर इज दैट इन सारे लोगों को इंक्लूड करने के लिए हमारा माहौल भी ठीक रहना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा, मैं दो एग्जांपल देकर खत्म करूंगा। आपको याद होगा कि पिछले साल कोलकाता में ऐसे मेडिकल कॉलेज में एक लड़की का रेप होकर मर्डर किया। आई नो दैट इज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। आज के सोशल मीडिया के जमाने में आपको पता है वो महीना 2 महीने वही चलता रहा सोशल मीडिया में। अब देख लेना, जो पेरेंट्स बॉर्डर पे थे, मेरे बच्चों को भेजू कि ना भेजू, भेजू कि ना भेजू, ऐसे हालात देकर उन्हें भेजू। इट इम्पैक्ट डीप। सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि हमें विश्व गुरु बनना है, फॉरेन स्टूडेंट को हमारे पास लाना है। हमारे पास अब तक ज्यादा से ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे पास नेपाल से थे, श्रीलंका से थे, अफगानिस्तान से थे। मैं आपको बताता हूँ, मेरे फिगर ड्रॉप किए हैं। 19-20 में 50,000 थे, 20-21 में 48,000 हो गए, और 21-22 में 46,000 हो गए। कम हो रहे थे, क्यों हो रहे? इट इज अ मैटर ऑफ रिसर्च। लेकिन मुझे लगता है कि जब फॉरेन का बच्चा वो हिंदुस्तान में आना चाहता होगा तो वो सोचता होगा कि भाई हिंदुस्तान का माहौल क्या है, क्या मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे से। एक एग्जांपल दूंगा, मेरे ख्याल से फरवरी की बात है, इस साल फरवरी की बात है, उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, आपने सुना होगा शायद। वहां के एक बच्ची ने सुसाइड किया जो नेपाल से थी, वहां नेपाली ज्यादा स्टूडेंट है। वहां के एक नेपाली लड़की ने इसलिए सुसाइड किया कि उसको एक यूपी वाला बच्चा तंग कर रहा था। जब उसने सुसाइड किया तो नेपाल के सारे बच्चों ने एक साथ आकर इंसाफ मांगने की कोशिश की। यू नो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ दैट इंस्टीट्यूट? इन सारे लोगों को हॉस्टल खाली करने के लिए कहा गया और विदाउट एनी प्रोविजन उनको रिहैबिलिटेशन लाके छोड़ा गया। जब ये आग लगी जब सोशल मीडिया में, तो नेपाल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा, और फिर नेपाल गवर्नमेंट ने हमारे गवर्नमेंट को कहा, फिर उन बच्चों को सही सलामत लाना पड़ा। अगर अगर वी आर गोइंग टू टीच फॉरेन स्टूडेंट दिस वे, व्हाई शुड दे कम? किसी हॉस्टल में किसी अरब कंट्री का बच्चा अगर नमाज पढ़ते वक्त पाया जाता है तो उसके साथ बदसलूक किया जाता है, तो व्हाई शुड दे से? So these are some of the issues, those pose some question, but finally let me tell you, there is some scope for improvement also. बस मैं दो बोलूंगा। सबसे पहले तो हमें डिजिटल डिवाइड को देखना पड़ेगा, जो इनइक्वालिटी है। किसी के पास 2 फोन है लेकिन किसी के पास एक भी फोन है।
साइकिल आप बांटने की जरूरत है, अब हमें मोबाइल ही बांटने पड़ेंगे, और ऐसे मोबाइल जिसमें बाकी सारी चीजें ना हो, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए। गवर्नमेंट अगर ये वेलफेयर स्कीम लाती तो अच्छी। दूसरी बात, रेगुलेटेड स्पेस एंड एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट पार्टनर। जैसे मैंने शुरू में कहा, थोड़ी देर पहले कहा कि गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट हाउसेस सब सामने आए, अपने कॉलेज बनाए, अपने इंस्टीट्यूट बनाए, वो फेलोशिप दे, वे स्कॉलरशिप दे, वो पैसा दे। मतलब प्राइवेट पार्टनर आर गोइंग टू ऑक्यूपाई मोर एंड मोर स्पेस, उसमें कोई बुरी बात नहीं। बट गवर्नमेंट मस्ट हैव वेरी साउंड mechanism to monitor the thing. प्राइवेट है मतलब वहां गवर्नमेंट ने देखना नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो रेगुलेटेड रेगुलेटेड एक्सपेंशन हो। एंड लास्ट थिंग, इक्विटी बेस्ड इंक्लूजन होना चाहिए, नॉट इक्वालिटी बेस्ड। सी दिस इज द पिक्चर इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट डिफाइंस डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। इक्विटी मतलब सारे लोगों को सेम सपोर्ट देना, इक्वालिटी मतलब सारे लोगों को सेम सपोर्ट देना। सेम सपोर्ट विल नॉट वर्क इन दिस केस, तो वी नीड सपोर्ट एज पर नीड। दिस इज कॉल्ड इक्विटी बेस्ड सपोर्ट। देख लेना कि इसको एक से काम चलेगा, लेकिन इसको दो चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि मैंने आपके 2 मिनट ज्यादा लिए हैं। इफ यू हैव समथिंग टू ऐड, समथिंग टू डिसएग्री, यू आर मोस्ट वेलकम। कृतिका जी, अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा विवेक जी का, फिर दिव्यांग जी, और अंत में कृतिका जी की, फॉर बीइंग विजिबल। आपका विजिबल रहना बहुत इसेंशियल था, अदरवाइज आई कुडंट हैव कॉन्फिडेंस। कोई सवाल, कोई सजेशन, कोई डिसएग्रीमेंट, मोस्ट वेलकम। कुछ है? नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं है। एग्री करती हूँ मैं आपने जो सब चीजें। ऑल्सो आपने जैसे बताया माइनॉरिटीज के लिए इंक्लूजन अवेलेबल होना चाहिए एंड ऑल। आई थिंक इस स्कीम के थ्रू काफी सारी चीजें ऐसे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गई है, एंड होपफुली द इक्विटी दैट यू मेंशन्ड अबाउट, वो होपफुली एक इट इज मैडम मैडम जुडिशरी में एक वर्ड है, एक फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ सिर्फ इंसाफ होना जरूरी नहीं है, इंसाफ हो रहा है ऐसे दिखना भी जरूरी है। सिर्फ रूल बनाने से, पेपर पे लाने पे इंक्लूजन नहीं होता है। एक इकोसिस्टम होता है मैडम। इस इकोसिस्टम में हम हैं, आप हैं, हमारा इंस्टीट्यूशन है, बच्चे हैं, सोसाइटी है, सोसाइटी एट लार्ज में पॉलिटिशियंस है, पुलिस ऑफिसर्स है। इन लोगों के द्वारा भी इंक्लूजन की, जस्टिस की बात होते हुए दिखनी चाहिए। आपका कैंपस काफी बड़ा हो सकता है कि आपके कैंपस में एक कोने में छोटा सा मंदिर होगा, होगा शायद, या नहीं होगा तो अच्छी बात है। इट इज सपोज दैट वी मस्ट हैव सेकुलर मंदिर होता है या होगा, मस्जिद होगी वहां। इज देयर एनी मस्जिद और एनी प्लेस फॉर प्रेयर? अगर आपको प्रार्थना की जरूरत पड़ती है, इसको भी पढ़ती हूँ। ये अच्छी बात मैंने कहा पहले मैंने आर्मी की कॉलोनी देखी है कंटोनमेंट, उसमें एक लाइन से होता है, वहां गुरुद्वारा भी होगा, और बुद्धिस्ट का भी समाज मंदिर होगा, वहां मंदिर भी होगा, वो मस्जिद। मतलब वहां इंसाफ होते दिखता भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेट मी टेल यू, हमारे पॉलिटी ये मैसेज नहीं देती कि इंसाफ होगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जुडिशरी, हमारे जुडिशरी भी ये मैसेज नहीं देती कि इंसाफ हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई इंजस्टिस कर रहा है, लेकिन इंसाफ होते नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये मतलब यही होना चाहिए। सिर्फ आपके दिल में किसी माइनॉरिटी को, किसी एसटी या किसी ट्राइबल के बच्चों को लेकर सिंपैथी हो, ये पर्याप्त नहीं। आपके ऊपर जो लोग बैठे हैं, हो सकता है आपके डायरेक्टर हो, आपके मैनेजमेंट वाले हो, उनकी सोच भी किस प्रकार है,
और वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए सबको, देन ओनली द थिंग्स विल वर्क इन द प्रॉपर। ये कागज पे सारी योजना लाने से, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करने से नहीं होगी, इसके लिए डेलिब्रेट एफर्ट करने पड़ेंगे, बट नॉट ओनली ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर्स, on the part of the entire ecosystem. This is what I have to show. So anything else? What do you think about too much focus on race, gender? Too much focus नहीं सर, अगर too much है भी, इतना too much होने के बावजूद भी इतनी सारी चीजें होती है। इमेजिन करो कि इतना फोकस ना होता तो क्या चीजें होती है ना। अभी किसी ने लिखा है कि too much focus on race, gender and sexual orientation, other identity can lead to, no, it is not division. It is discrimination for the positive purpose. सर रिजर्वेशन के पीछे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल होता है। आई रिपीट, रिजर्वेशन इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। भाई डिस्क्रिमिनेशन में उसकी नीड ज्यादा है ना आपसे, उसकी नीड आपसे ज्यादा है, इसलिए उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है, तो दैट इज कॉल्ड रिजर्वेशन। ये डिवीजन नहीं करता, दिस इज नॉट डिवीजन। एंड if you think so, then you need to think it in the broad sense. अब मैं क्या कहूँगा, अलग बात, अलग में ये कह सकता हूँ मैं, नहीं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, नो 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 नो, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हियर एंड आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दैट। उसके लिए हमारे बहुत सारे लोग खाली बिल्ली बैठे हैं, उनका वही काम है, हमारा वो काम नहीं है। नो, दैट इज देयर आइडियोलॉजी। नो, हमें रिजर्वेशन को लेकर ब्रॉड हमारी आइडियोलॉजी रखनी पड़ेगी। अब मैं जानता नहीं हूँ कि सर्वे साहब किस कैटेगरी से, में ये पूछना भी ठीक नहीं है, लेकिन जिसका दर्द वही जानता है, दूसरे नहीं जाने। जिसका दर्द वही जाने, जातन लागे वो तन जाने, कहते ना। अगर कोई ट्राइबल का बच्चा है, कोई एससी का बच्चा है, कोई माइनॉरिटी का बच्चा है, उस वो किस चीज को फेस करता है वही जानता है। चलो एनीवे, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you so much for such a nice session and experience session you have delivered here, sir. और सही में सर बहुत सी चीज़ें ऐसी है डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन में कि रीजन वाइज बहुत से चैलेंजेस अभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, एंड डेफिनेटली यस एंड डेफिनेटली वी हैव टू ओवरकम। इसीलिए तो सर एसईजेड की बात करती है, स्पेशल एजुकेशनल जोन। देखो सर, हमारे सामने चैलेंज ड्यूअल है। हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का भी चैलेंज है और क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन का भी चैलेंज। समझ लीजिए सर, हमारा जीआर जैसे कि आपने शुरू में भी कहा था कि ओनली 28.4 है, मतलब हमारे 71.6 बच्चे अभी भी बाहर है, मतलब हमें क्वांटिटी भी बढ़ानी है और साथ ही साथ क्वालिटी भी बढ़ानी है। एम्प्लॉयबल बनाना है, यूनिवर्सल बनाना है, वर्ल्ड रैंकिंग में आना है, और साथ ही साथ इन दोनों के लिए हमें पैसा चाहिए, उसका भी हमारे पास चैलेंजेस है। और ऐसे हालत में ये पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा उम्मीद रखती है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि प्राइवेट सेक्टर का बढ़ना मैं बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन उसका ग्रोथ रेगुलेटेड होना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि अमरावती में 2-4 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो सकती है सर, नागपुर में 2-4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, लेकिन किसी तहसील प्लेस में कोई है क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहाँ जरूरत है वहां। एक्चुअली आज के दिनों में सर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी है, दे आर फोकसिंग ऑन द एनहांसिंग देयर प्रॉपर्टीज। रिसेंटली द टाइम्स ऑफ इंडिया हैज पब्लिश्ड वन आर्टिकल। इसलिए दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, दैट प्राइवेट सेक्टर इज नॉट बैड, but it must have some regulation to follow, and there should be someone to see whether those things are being followed or not. Yes sir, definitely. So मैं एलपीजी को बुरा नहीं मानता हूँ सर। एलपीजी के पहले हमारे हालत क्या थे मुझे पता है सर। हमारे पास सिर्फ एक मोटारा कंपनी थी, एम्बेसडर, राइट? यस सर, यस। सबसे पहले मारुति। उस टाइम में हालात ऐसे सर, हमारे जेब में पैसा होने के बावजूद भी हमें सालों तक इंतजार करना पड़ता था।
आप टेलीफोन का आपको याद होगा, टेलीफोन को नंबर लगाने के बाद 7 साल के बाद आपको कनेक्शन मिलता था। जब घर में टेलीफोन आता था तो क्या उत्सव हुआ करता था, सेलिब्रेशन हुआ करता था। आज देखो आपके पीछे रोड लोग पड़े हैं सर, हमारा कार्ड ले लो। आपको रोज एक बैंक वालों का फोन आता होगा, सर हमारी तरफ से लोन ले लो। आज हालत एक दिन ये थी सर कि हमारे पास सैलरी होने के बावजूद भी कोई भी गवर्नमेंट बैंक हमें लोन देने के लिए तैयार नहीं। हाउसिंग में तो बहुत दिक्कत थी। अब जस्ट इमेजिन द थिंग बिफोर 90s। आज मुझे रोज एक का फोन आता है, कभी बजाज वालों का आता है, कभी एक्सिस वालों का आता है, कभी एनबीसी वाला आता है कि सर हमारे पास इस टाइम आप लोन लें। सर वी आर रिपिंग द प्रॉफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। वो मोबाइल कंपनी हो या फिर टेलीफोन कंपनी हो, ऑटोमोबाइल कंपनी हो या बैंकिंग, लेकिन उसको रेगुलेशन चाहिए। जैसे कि आपने शुरू में कहा कि मनी मेकिंग मस्ट नॉट बी देयर। इसलिए एक अच्छी बात है, इस पॉलिसी में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, फिलांथ्रोपिस्ट। ऐसे लोग या ऐसे समूह जो समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली सर हमारे पास ऐसा कोई बैरोमीटर नहीं है, हम किसी का सोशल कॉज मेजर कर सकते। कौन आदमी कितना ईमानदार है और कितना पैसा कमाना चाहता है, ये गिनने का, ये काउंट करने का हमारे पास कोई भी मीटर या टेप नहीं है। राइट? हेलो? Yes, sir. Yes, yes. ये गवर्नमेंट का सर, मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट का ही काम है। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ने वहां जाकर भी देखना नहीं क्या कर रहे हो या उसकी तरफ इग्नोर कर देना। क्यों? चलो, एनीवे इफ देयर इज नो क्वेश्चन, लेट मी कैलकुलेट नाउ। थैंक प्रोफेसर आतिक साहब, और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फॉर ऑफरिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। Thank you, sir. Thank you so much. And with the kind consent of Professor Bere, sir, I would like to declare that this session will be over here. Thank you so much, sir, and thank you.